to Santa Gadge Maharaj, under whose name our university stands. That name itself gives lot of a different, you can say, color to the education field. Gadge Baba was in Marathi what we call it as Salto Bolto Vidyapit. Then let us thank our Honorable Vice Chancellor, Pro Vice Chancellor, Dr. Atik sir, then UGC HRDC, erstwhile of course. Now it is UGC Mahamana Madan Mohan Malviya, Teachers Training Center in charges, my friend who was comparing the beginning of this session. Now we will have, as sir has introduced, we will talk about creating some awareness, some interactive session on the basis on the implementation part of National Education Policy 2020, and this will be dedicated mainly towards skilling part of this you can say NEP implementation, and among skilling also the qualification framework, or in general what are the frameworks under which NEP will be implemented, and all of us will have to orient ourselves including our curriculum. So we will be talking about various frameworks with specific qualification frameworks, and that too national higher education qualification framework. What are those differences that we will see as we progress upon it? So during our 90 minutes of interactive session, what we will do, we have small part of our discussion, so that after each part also, if somebody has got something to ask or want to correct me or reorient me, so at every part you can stop me, we can question, or at the end, of course, question answer session will also be there. So one part we will keep for our question answer session, and overall our 90 minutes, or say 10 minutes if we keep at the end for interactive question answer, then 80 minutes we will divide it in 8 parts. So first part will be, of course, just introduction to NEP, from what was its background and pillars, so that we can understand further as we progress through it. Second part, we will have the basic question which is answered by NEP is, in 21st century, what really education means and why education one must take. So that few minutes we will devote to it. So pillars, or you can say domains of education, and of course more relevant to higher education. Third part, we will discuss what are different frameworks under which NEP will be implemented. And we have to, it is a very well structured way of implementation of NEP. So if we understand that structure or that framework with what is the such type of framework internationally, nationally, in skill education, in higher education, so that the different types of frameworks we will introduce. Then we will go for qualification framework, then which is NSQF and NHEQF. We will go to discuss some NSQF little bit in detail, because unless we understand NSQF, it is completely aligned to NHEQF, or NHEQF is based on NSQF. So what are these terms? Presently, you may find what are these NSQF, NHEQF, but shortly within few minutes, all these terminologies will also be clear. Then we will understand what is the importance of a graduate attribute in framework and in particularly curriculum framework, then learning outcomes, then LOCF, learning outcome based curricular framework. And then we will combine in 2-3 slides whatever today's talk we will develop from this line. So this is how we will plan our today's session, and expected outcome of our today's session will be, at least we will become sensitized and aware of various frameworks under which NEP will be implemented. And we at our end, see, there are two aspects. What central government or union government or UGC or regularity bodies will be doing, we will not touch at all, because there is nothing which we can do at central government level. Second is state government or state statutory bodies, whatever are there.
So we will not even touch what they are expected to do. But what is important for us is that whatever our statutory regularity authorities give us, or state government and its regularity authority gives us, it comes to implementation is at our hand. So policies may be wonderful, but unless we understand the right way, say unless we get ourselves aware or sensitized about implementation, the whole exercise may get, you can say, not in a proper way if we don't understand the we are the implementing people. So what university is expected to do, what the board of you can say studies and our people who are in university framework they are able expected to do, we as a institute and we as a teacher, in what framework we should orient ourselves, that will be the way we will discuss our today's topic. So let us begin with our first part. uh, just a minute. It is okay. So our first part will be some background of National Education Policy 2020. Friends, we have to understand few things. Then we will be able to really appreciate why these big changes or revolutionary things are coming in our this policy and in a structured way. There are three important events after 1985, our last national education policy with some modification in 90s. The three important events had taken place globally or at national level. First was somewhere in 92, India or many of the countries of the world have adopted globalization as their policy of a nation. We may feel what that liberalization, globalization, and privatization has to do with our today's discussion. It has to do many things. First, foremost thing is Washington Accord was one of the part of our, you can say what we generally call it as GATT agreement. What was that? Education was also one of the, it was not only commerce trade, which was liberalized or globalized. Education was also one of the sectors. Now we are feeling its hit now, but the foundation lies in globalization. So it is, we should appreciate the globalization concept in respect of education was standardize the education, particularly higher education, so that a graduate from India can be considered at par with graduate of any university of the world, so that transition from one university of India can be easily to go to other universities, and more so of employment. Once we say that he is a graduate with globalized standard, so there will not be any question about its learning outcomes as the things will get standardized. So globalization was one effect of 90s. Second effect was of around 2000 when Johannesburg Conference or Bonds Declaration, what we commonly know, is that world, all countries, most of the countries, more than 180 countries of the world have accepted that 21st century, the technology will not be only technology as it was in earlier centuries, but it will be sustainable. The concept or model of development got changed from only development to sustainable development. Reasons all of us know: global warming, excessive taking of natural resources. Uh, so concept of sustainability came into picture, and Bones Declaration says that the onus of future technology will be on the shoulders of higher education. So sustainable development, they had declared 17 goals. And if you see particularly sustainable development number 4, the 17 goals are to be attained, and India has promised the world to attain most of them by 2030. And sustainable development number 4 was about educating, skilling the people. That became other than other goals also. So that also was second event which has bearing on policy, national education policy 2020. And third was IT revolution. We have seen that by 2005-6, all sensitive sectors, including finances or share market
they all become the IT-enabled services. But importance of IT-enabled education became very prominent during COVID era. So these three events we will find that has got lot of effect on education policy 2020. The one more point we should understand that the draft committee of national education policy was chaired by none other than Dr. Kasturi Rangan, eminent scientist, and whole team. We see the names of those committee, you will find that they are all world renowned, you can say luminaries in the field of education. Why we want to state it? We should not have any doubt that the policy or draft policy has come out after considering the requirement of globe, requirement of country, and the, you can say, was is drafted by very learned people. So they have given big thought. So we should not have any doubt in accepting their draft policy or whatever statements they have made. There should not be element of doubt about their recommendations. Now, if we go through the policy, we will find that the policy is based on five foundations, and each of them you will find its roots somewhere either in globalization or in sustainability or in IT enabled. Access equity, you will find that, and even affordability. They are offshoots of sustainability concept only. And quality is from, you can say, accreditation processes, worldwide standardization. That is how NAC or NBA had come out. So this policy is based on these five pillars. Now, accountability, as soon as we talk about accountability, it means you have to first decide for what I am doing any activity, including education. And at the end of that activity, we have to measure it against some standard and see whether we have reached to the benchmark. So this accountability is very important, and probably in our today's discussion, we will find these factors: access, equity, affordability, of sustainability. Part of it probably we will have less part on today's discussion, but quality and accountability in all sectors of education is important. And when I say accountability, I mean some standards, benchmarks are for any outcome. So first outcome has to be decided, the level, or you can say benchmark, is to be decided. Whatever is outcome we take out, it is to be measured, it is to be compared with whatever is the benchmark, and somebody, means whole system, everybody, whether it is all stakeholders, we can say, should be accountable for reaching to the benchmarks of expected outcome. This is how the whole policy you will find revolve around when it comes to implementation. Now, when we talk about the policy, we will find that it is having 4 5 parts. Say in part one is about school education, part two is about higher education, then regularity, etc. Out of those 4 5 parts, for our today's interaction, we will concentrate only on part two, that is higher education, because it is relevant for us. Out of this, there are 10 chapters in part two, higher education. Out of those 10 chapters, we will be mainly concentrating on optimal learning environments, because this is the framework which we have to provide, and vocational education, that is skilling. Other parts we will not be able to touch much, but we will be talking about these two parts of this NEP when it comes to. Now, first and foremost question is, in case of 21st century, what is education? So NEP is based on the concept of education, and it is, you will find throughout education policy and its implementation strategies, there will be three domains on which the education, or you can call it three domains of education, whether it is school education or higher education. But of course, for today's discussion, we will be concentrating on three domains of higher education. And the third domain is affective domain. What do you mean by affective domain? Affective domain
means the behavior, values, morals, constitutional values. Up till now, our education system was definitely touching. I will not say that it was not touching this affective domain, but in NEP, the almost equal weightage is given to all three domains. So, importance of behavior, professionalism, you can say ethics, morals, as we go higher and higher, you will find this factor is also important. So the third domain on which higher education or total education is based is affective domain. Second domain is psychomotor or skill domain, doing domain. Our today's discussion will be more focused on this second domain, that is psychomotor domain, which is doing or skilling domain. Again, the importance for today's discussion is up in our present education system, was there not doing or skilling? Probably it was there, but it was not there with stating the learning outcomes or the depth which with doing or skilling is expected. That is why the people used to say that commerce graduate, when it goes to banking, he has to be learn everything from that. Or same was talked about engineering graduate. So any graduate, it was talked that they know किताबें बहुत पढ़ी है, but वो कुछ कर नहीं सकते. So in case of national education policy, lot of weightage is given in integration of skilling or vocational education, or it is psychomotor domain. And first domain is cognitive knowledge and information domain. Probably our Indian system, our university system was is very strong and much concentrating on this first domain, that is knowledge domain, or what we call it as cognitive domain. Now, friends, we have to understand, even though there are these three domains, in each of the domain, there are various levels. So this is what, when we talk about framework, we have to understand that basically education will be in three domains, and each domain has got various steps, or what they call it as various levels. So our education will be now level-based education, competency-based education, and levels will go from lowest level like knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. So you will find that these domains and levels are applicable right from school education to highest education. And we know that school education is now 5 plus 3 plus 3 plus 4 pattern. So even a child of 3 years will come into, you can say, education system. But expected cognitive domain of knowledge domain or thinking domain at that level will be altogether different than that of, you can say, PhD level. So one thing we have to appreciate at this stage, that amongst these three domains, each domain will be having various levels. In case of cognitive domain, or what they call it as Bloom's taxonomy, this is revised: remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. These are the six domains, six levels of cognitive domain. Remembering is something like memorizing. So you will find that at school level, table, you memorize the table, memorize the poem, recite the poem. That type of stress is more on remembering. As the level increases, it goes on understanding or applying, analyzing. So the main problem pointed out by Dr. Kasturi Rangan committee is that our education is somewhere halted at applying level. So we remembering is there, and is it not required? It is required, but it is the lowest level. Understanding and at the most apply. But in higher education, analyzing, evaluating, and creating is the level with which we have to take. Now, when we will go for framework type of a system, you will find that at each level, we will be have to decide our outcomes, and those outcomes in case of higher education will be more of applying, analyzing, evaluating, and creating when we talk about knowledge domain.
When we come to psychomotor domain or doing skilling, where we will be talking more detail as we go ahead, you will find that again there are 7 levels in case of psychomotor domain also. Say from perception, set, guided response. It is something like that: get, set, go. In any competition, we call it get, set, go. Perception is a get. So all your teacher, your guide will be preparing it. Say for example, I take small example of child where we say that, okay, identify the shape. What is sphere, what is triangle, what is cube? It is a perception. We ask student to do something, identify the color. So then student will tell the color, identify the flower. So these are all perception types of, you can say, psychomotor domain and low level at a child level. Set is something where the teacher, the candidate, our student will be emotionally and physically ready to act. So that is why get, set, and go, but it will be under all guided responses. Somebody will be telling, and the child will be repeating it, doing it. So then his guided response means go. Again, under somebody's direction, the child will imitate, or you can say practice the skill. So this is what get, set, go. The first 3 stages, we can say that it is of lower level or school level domains mainly. And in case of higher education, as we progress, what we call it as first year, second year, third year, fourth year, you will find that even doing skilling psychomotor domain, more thrust when we design syllabi or curricular should be from mechanism, complete overt response, adaptation, or organization. What are these stages which will be applicable in case of higher education? It will be the performing with increasing efficiency. Next level will be performing automatically, almost like a habit. Adoption means some new situation comes, new problem comes. Whatever skills have been learned or adopted, so proficiency has been acquired. It should be able, the student should be able to apply or adapt it to the new set of solution, new sets of problem. This is what will be higher level of domain, and highest high, highest level will be, you can say, creating new patterns for specific new problem situations. So the this is how the levels will go, and we have to understand at this stage that even in psychomotor domain there will be 7 levels. And when we will design any curricular, that time let it be internship also. We have to understand that, let it be laboratory practicals, let it be any doing skilling domain. Lot of weightage is given in NEP on this doing skilling or psychomotor domain. We have to understand that as we go higher level, we will see that in case of higher education, level starts after 4 to 8. In case of NHEQF, the levels are there. In case of NSQF, they are 4 to 10. So as we go from 5 level to 6, 6 to 7, 7 to 8, the complexity and outcome expectations will be higher as we go from higher one level to a higher level. In case of third domain, affective domain, feeling and attitude, again you will find that there are 5 levels. The lowest is receiving, then responding. But in case of higher education, it will be more of valuing, organizing, and internalizing. What is that? In case of receiving, it will be selectively, as you can say, attend candidates when some stimuli is given. Accept, acknowledge, aware, notice, pay attention. So it will be school like some stimuli is given, and to that the behavior of the child gets developed. In case of responding, again, it is the response. So some stimuli has to be given. So that is why we ask, you can say, school children to arrange for some play, give some consent, contribute, some, you can say, cooperate, sharing of tiffin.
that type of behavioral development takes place, you will find that those are low level important, but school level. The higher level starts from value ethics. So what will be minimum? Our lower level in our higher education, we should, you can say, teach our student. We should have curriculum where students are able to attach value or worth to whatever or something, whatever they do. So this is the first minimum lower level in case of our higher education. As the year will progress or level will progress, the conceptualizing of the value and resolving the conflicts in value and ethical way, that type of training will be required. It is more important in case of globalized world because our student will be working in cross-cultural area in the team where one of the team member may be from South Africa, what generally we call it of different color, dark color, maybe of Europe, white color, maybe Asian, maybe Chinese. So cross-culturally, a student should be able to conceptualize the values and resolve the conflict on the basis of value. It is the expected type of teaching we have to give. Students should learn it, and last highest level will be integrating the value into a value system. You will find that in even corporate sector, highest management, it is more about value system, ethics system rather than money or anything else. So you will find that even in case of feeling or attitude or behavioral domain, which is called as affective domain, there will be various levels. And according understanding this level, we have to integrate those value system into our education system to inculcate it to our student. So whatever moral value, constitutional related subjects are there, their learning outcomes have to be made. The framework will have to design so that as the level goes, suppose some moral or ethical value subject is there for first year or level 4.5, it will have different learning outcome than a professional ethics subject probably at final year or eighth level or sixth level, you can say subject. So this we should understand the domain as well as stages of domain before we go for redesigning the undergraduate program, national qualification framework and national higher education qualification framework. So just take away from whatever we have discussed. So we have seen up till now that education will be now in three domains. One will be knowledge, skill, and behavior. And in each of the domain there will be the various levels depending upon level for which the student is learning. Say, for example, those domain skill and behavior of a certificate level student will be different level learning outcome than a student pursuing for graduation final year or post graduation or for PhD. So one thing before we go to our next part, that is qualification and qualification framework, we understand that education will be in three domains and it will be level based. So with this, let us start with now qualification framework and higher qualification framework. What does this policy states about it? The policy statement only relevant portion for our today's interaction session I have taken out for discussion. Let us understand NEP policy with this perspective. You will find that the policy states an individual should study one or more specialized area at deep level, knowledge level, develop character, ethical, constitutional values, behavioral level, and should have 21st century capabilities along multidisciplines, including arts and humanities, skill domain. So NEP policy talks about development of a student in three domains, that is knowledge, skill, and behavior. And one more important statement from NEP policy for our discussion is what for education? Why should a student go for education? Ultimately, we have to prepare students for their more meaningful and satisfying life. Remember, friends, this is the ultimate goal. Why education? Meaningful and satisfying life. How? We have to prepare student for work roles.
What does it mean? See, this word is very important for we the teachers, that our duty is to prepare students for their future work roles. What does it mean for us? It means whatever course a student is undergoing, we as a teacher, we as an institution should know if this student is learning this level of particular course or program, what will be the work role that candidate will be doing when he graduates or when he gets qualified. So we beforehand should know the work role. So fundamentally, our duty starts from understanding what are the various work roles in the society, maybe in the area of employment or self-employment. And according to the areas where jobs are available, we have to understand various types of jobs. And in each job, what are the various tasks a student is will be performing. And we have to prepare student from that futuristic job role. This is something which we as a teacher and institution is given the additional responsibility. Probably up till now in our education system, we had never prepared our syllabi or student for what after 10 years they will be doing, what after 5 years they will be doing, what after 1 year they will be doing. We were preparing for giving some degree or awarding some qualification. But now we have to prepare students so that they will be fitting properly in their work roles so that they will become economically independent. So these two, three words are very key for we the institution and teachers, that we have to prepare students for their future satisfying life. We have to prepare students for their future work role, and we have to prepare students so that they become economically independent. And this is probably when it comes to accountability, probably in future we may get ourselves accounted for these three areas. Now when I talk about preparing student in this area, so there is very well structured way of doing it, and that is why the qualification framework comes into picture. Now what does the policy statement says about qualification framework? Remember, these are the only two statements I have taken out of the policy regarding framework. It says states that formulation of expected learning outcome for all higher education program. So our first and foremost, before we design curriculum or we deliver the curriculum, it will not be the important as teaching as more important than learning, because beforehand we should know after attending completing this program what are the expected things a candidate will be having. So we have to formulate the expected learning outcome for all higher education program with 12 plus or 18 when the candidates attain the age of 18. After that, whatever learning programs, formal programs will be there, for each of the program, we will have to design or first write down, jot down the learning outcome. This is one statement. And second statement is, on the basis of that, National Higher Education Qualification Framework will be formulated. Now, how will be that framework? It will be in synchronization with National Skill Qualification Framework for what? Integration of vocational education into higher education. So whenever we will implement NEP, we have to see integration of vocational education or doing or skilling or psychomotor domain into higher education. This will be our important task, or this is the, you can say, dictum given by policy, that integrate vocational education into higher education. But how? It should be on the basis of National Skill Qualification Framework. Now question may come, before NEP, how this NSQF come into picture? So, big friends, let us understand that NSQF had already come in 2013, much before NEP 2020. Now, why it has come? Again, you will find that it was the part of globalization. International labor organizations had completely prepared worldwide some standard framework for skill education, and India also
by through various committees in aligned with international labor organization and international standards. The national skills qualification framework was already formulated in 2013 only. It had come out as an official document. And then NEP says that NHQF will be formulated in synchronization with NSQF with the purpose of integration of skilling education into higher education. So we will have to understand what this NSQF is and how it has get synchronized with NHEQF. Now NHEQF document has come out and that has to be implemented at our university and institute level. Now when we talk about these things, NHQF, NSQF or framework, so we will be today discussing three important frameworks. One is qualification framework, which has got two important subparts, that is qualification levels and qualification descriptors that we will discuss as shortly as possible because of paucity of time. Second framework is credit framework. We know that from marks or our earlier assessment and evaluation system, we have to switch over to credit framework. So credit framework, national credit framework document is also published and it is made mandatory for all universities in the country to go for it. And last and important is curriculum framework. Now let us understand the importance of these three types of framework. What is the purpose of having these three frameworks to be implemented by each and every institution of higher education in India? It means it will, number one, standardize various levels of qualification throughout the country. Means a university from, say, Santa Gadge Baba Amravati University graduate and some graduate from Tamil Nadu University or Uttar Pradesh University or any other state university, they will be at par when we say he is a certificate holder, when we say he is a diploma holder or degree holder or postgraduate or doctorate. It will be through this framework and standardization. All degrees, certificates, postgraduate degrees, they will be brought in synchronization with everybody. So all degrees will be, when any university will say that this is my graduate, it means the university is, you can say, giving a stamp that certain attributes are there which are universally accepted, and any graduate of any university in India will have same attribute, and those attributes will be in synchronization with global attributes. So it begins from global attributes, it comes to national attributes, then it comes to the state and individual universities and to individual institutions. So synchronization of attribute is the foremost and primary reason of putting these three frameworks in place. So let us understand, when we have understood the importance that globally standardization will be there. So everything is taken to the global standard. And one step below is everything is taken to the national standard. All universities, all higher education institutions, their qualifications means certain attributes uniform for everybody. So under those uniform attributes, everything, syllabus is to be designed, course curriculum is to be designed. So those attributes we have to understand. And this is the I achieved through three frameworks: qualification framework, credit framework, and learning outcome based curriculum framework. So let us go understanding of the definition of qualification. Of course, all of us know that traditionally we mean qualification means somebody has successfully completed a prescribed program of study or training program offered by educational institution. This is our very simple way of, you can say, accepting the definition of qualification. Or we say that they are the formal awards in broad discipline-free nomenclature, such as certificates, diploma, bachelor degree, master's degree, and doctoral degree. This is what we up till now mean by qualification. Important part is qualifications are to be awarded by some competent authority. Then only it will get recognized. It may be college or university, but now the word line comes,
after attainment of expected learning outcomes and successful completion of program of study. Slowly from concept of qualification as something, a traditional sense that somebody has completed some program, it comes to some awarding with some certification. Now it is with recognition of attainment of learning outcome. And more important is they are to be awarded after assessment and evaluation of learning levels conducted by competent body that determines the achievement by student of expected learning outcomes to the given standard. Each word, let us go by reverse way. Given standard, so there will be benchmark, and it has to be some competent body have to certify, has to measure and determine that achievement of this expected learning outcome are to the level of some given standard. So benchmarks have to be designed, some outcomes have to be designed, some mechanism of measurement and mapping is to be done, and it has to be done by some competent body through the process of assessment and evaluation. What does it mean for us for today's you can say takeaway from this statement is that assessment and evaluation will become very important, and there may be, that is why National Testing Agency, etc., is coming into picture. They will assess, so there will be some competent body which will, you can say, measure the achievement of the learning outcome by the student, and then validation of certificate will be there. Now, this is what precisely NAC and NP is doing. You will find that in criteria 3 and 4, they say that map CO with PO and map attainment of CO. This mapping CO with PO and attainment is, this is what is important, and this is some competent body, maybe NAC, maybe accrediting agency, maybe National Testing Agency, but will be there who will assess and evaluate. We have to, for us, takeaway is the awards of certification or qualification will be on the basis of benchmarking, measurement, mapping, and then certification. What does it mean? A student who is in final year maybe get mapped with first year or certificate level only, and a job given to a graduate may be available to only certificate holder because its mapping shows that his expected learning outcome are up to level 4.5, even while he is expected to achieve of 6. Now, in short time, we will understand what word I am using right now. One more thing, each qualification will be aligned with some credit system. That is why credit framework we have to understand, because curricular framework, credit framework, and skill framework and qualification framework, they are all aligned together. It is a package and we have to understand in totality. These credits will be on the basis of two things: academic workload of student and learning, defined learning outcome. So our credit system will also be based in accordance with National Credit Framework. It will based on workload of the student and you can say measurement of learning outcomes. So this is what is the fundamental concept of the word qualification. Now, when we move ahead, qualification framework. The qualification framework, now we have understood what do we qualification mean by in this NEP concept. Now, qualification framework will be the structuring of existing and new qualification. So they will not be random. They will be properly aligned and structured. Say level wise, level 4, level 4.5, level 5, level 5.5, level 6, level 6.5, level 7, level 7.5. And according to level, these qualifications will be also structured. Maybe certificate, maybe diploma, maybe advanced diploma, maybe degree, maybe degree with honors, maybe diploma postgraduate, maybe postgraduate degree, maybe fellowship, maybe research. Like that, all qualifications and level, they will be properly structured. A pyramid will be made with integrating existing qualifications
and whatever new qualifications will be proposed. Now, this structuring will not be a random. It will be defined by the learning outcomes. How learning outcomes will be mapped? They will be mapped with graduate profile or graduate attributes. Who will give us graduate attributes? Probably graduate attributes are already given by UGC, by our regularity bodies, by NAC, by NBA. From where they have come? They have come from international accrediting agency. See, this is how a complete process of mapping our higher education system with international standard is taking place. So you will find that graduate attributes or program outcomes, what they call as, they are aligned by our national statutory agencies like UGC and AICT with the global agencies. And UGC will give us what are the attributes. Every university need not have, but we have to take the attributes pointed out. There are 12 or 18 attributes depending upon NBA or NAC, and we have to take them that when a graduate, let it be of Amravati University, let it be of Mumbai University, let it be of Jammu Kashmir University, there, when we say graduate, the attributes will be well defined, given by national agencies, which in accordance with alignment with international standards. So attributes will be given. According to the attributes, we have to design learning outcomes. And those learning outcomes will be mapped with course learning outcome. This is how the qualification framework will come up. What are course learning outcome? Suppose in a given year, suppose I am talking about third year, fifth semester, there are 5 subjects. So for each subject, at the end of learning this subject, student will be able to do 4-5 statements have to be given. They are called as course learning. They have to be mapped with program of this thing, PO program objectives or outcomes. This is how everything will synchronize, and we have to understand that in qualification framework, we will be structuring our all qualifications, keeping in mind graduate attributes, learning outcomes, and course learning outcome. And qualifications will be described all, you can say, at each level, maybe at course level, maybe at program level, maybe at level of education or certificate, diploma, advanced diploma, degree. So whatever level you take, we will have to specify the qualification, and that is known as qualification descriptors. So for it is a certificate we are awarding, descriptors will be there. Diploma we will be even for doctoral degree, there will be the qualification descriptors, and this will be in aligning with the framework. So qualification framework will be now our education is moving towards competency-based education and training and outcome-based learning. So important aspect of qualification framework are competency and outcome-based learning. Of course, it will be based on 3 domains: knowledge, skills, values, and attitudes. So you will find that domain throughout the NEP, you will find that they talk always about 3 domains: knowledge, skills, and behavior. And in each of the domains, their learning outcomes and competency will depend upon the level or the award of certificate or degree, whatever we are talking about. So this is the fundamental principle of qualification framework. So one line takeaway from our slide, we will have 3 domains. Each domain we will have different levels. We will have, according to the level, we will have different qualifications, that is certificate, diploma, etc. And for each qualification and each level, there will be qualification descriptors based on learning outcomes, its measurement, and mapping with graduate attributes. So this is how the qualification framework will have to be designed and implement when we implement NEP at our level. Now let us come to national qualification framework. Now this national qualification framework is based on international qualification framework. But what is this NQF national qualification framework? It is the instrument. They have provided us that instrument for what?
for classification of qualifications according to set of criteria for specified levels of learning achieved. Remember, learning achieved means assessment evaluation by competent authority, and it will integrate coordinate qualification from each education and training sector into a single comprehensive qualification framework. So it is a standardization of qualification throughout the country in alignment with the globe. So this is what we mean by this. It is an instrument of aligning everything into a single document. Now, it is based on international qualification framework. That is why in the initial stage only we have said that it has the effect of globalization. So from 90s till date, this complete whole Indian education system is getting standardized with global available best systems. And even for this qualification framework, the best is international qualification framework. The Bologna process, it is a most far-reaching framework. It is maximum means most of the countries and most accepted international qualification framework is Bologna process. It is from European higher education area, and it is for development of QF in European Union, all countries. So on that basis, our Indian national qualification framework is best. So within 2 minutes, let us understand what is this NQF of European Union countries or Bologna process. Bologna process is the complete qualification descriptor is called as Dublin descriptor. So you will find that Dublin descriptors and our Indian national qualification descriptors, they are aligned with each other. So let us understand Dublin descriptors. Once we understand Dublin descriptors, it will be easier for us to understand our national skill qualification framework. Once we understand our national skill qualification framework, which are aligned with NHEQF, and NHEQF has to be implemented by us. So what are these Dublin descriptors? Dublin descriptors are general statement about the learning outcomes that are achieved by students after completing a curriculum of studies and obtaining a qualification. Now we have understood qualification, we have understood learning outcome, and relating qualifications with learning outcomes with expected benchmark. And in three domains, those descriptors, those statements are known as Dublin descriptor. So let us see. These Dublin descriptors are having 5 elements. These 5 elements are based on three domains. First is knowledge and understanding. So what are the learning outcomes depending upon various levels? The statement will be given for a given level in the domain of knowledge and understanding. So that is the first qualification descriptor of Dublin. Second is applying knowledge and understanding. Third is the making judgment. Fourth is communication skills. And fifth is learning skill. You will find that Indian National Skill Qualification Framework is also in 5 domains. You will find that it is more aligned towards Dublin descriptors only. Now, what does this mean by first is knowledge and understanding statement? It means the student, when the student demonstrates the knowledge and understanding in the field of study after general secondary education, because we are talking about higher education. Remember, it is European country statement and is typically at a level which is supported by advanced textbooks. So probably when they certify that level, they may be seeing the books through which a student has learned. It includes some aspects that will be informed by knowledge of the forefront of their field of study. So traditional knowledge, forefront knowledge, that will be tested, assessed, evaluated by competent authorities, and depending upon the level for which they have described that statement, once the student achieves, then they will say that, okay, on this first knowledge and understanding level, student has achieved that level. Second is whether the student can apply their knowledge and understanding in a manner that indicates the professional approach to their work or vocation. Again, remember, friends, they are talking about their work, so job roles.
So India has also, NEP has also taken same concept of job roles and have competencies which are demonstrated through devising and sustaining arguments and solving problems in the field of their study. So this is what is the second descriptor. So they will assess, evaluate this second qualification descriptor also. Third is whether the candidate has ability to gather and interpret relevant data, so to informed judgment. So relevant to social, scientific, and ethical issues. Again, you will find all three domains are covered. And this is what will be expected, to what level a student is able to gather and interpret. Maybe at lower level, certificate level, their gathering and interpretation expectation will be different than at diploma, will be altogether different. And if we go for PhD, you will find that gathering the data, interpreting that relevant data, and making judgment, that level will be altogether different than certificate level. So very clear statements have to be made for each level and for each qualification. Fourth one, the Dublin statement is communication the information, ideas, problem, solution to both specialist and non-specialist audience. So that will be tested. That is why seminar, project, their presentation, paper publication, their oral presentation, written communication with ethical values, that is tested, and then only the certification is issued. And fifth one is lifelong learning skill. That is, they should be able to continue to undertake further studies and higher degree of autonomy. So these are the Dublin descriptors. You will find, once we understand this five descriptor, Dublin descriptor, you will find that Indian qualification framework is also based on this international qualification framework. So when it comes to now India, our NEP implementation, so we have got our own national qualification framework also, which is now a published document. The foundation is this national qualification framework is for both general education and for vocational education and training also. And accordingly, for initially in somewhere 2010 only, National Vocational Qualification Framework, that is NVQF, has come out. And somewhere in 12, National Vocational Education Qualification Framework, NVEQF, it was mainly for skill education. So international level organization, industrial bodies, Indian government, and world statutory and regulating bodies with Indian regularity bodies, particularly for vocational training and education, they have come up with the qualification framework in case of vocational education. And the culmination of NVQF and NVEQF resulted into NSQF. So by 2013-14, India's National Skills Qualification Framework was published, accepted, and made. It was implemented also in the area of vocational education and training, and it is called as National Skill Qualification Framework. And then somewhere after 13, somewhere in 17, 18, draft was, you can say, submitted to Union government by Dr. Kasturi Rangan Samiti. And by 20, the draft was accepted and it has come out as NEP 2020. In NEP 2020, National Higher Education Qualification in the last 2 years, it has come out, but it will find that as NEP has suggested and accepted as a policy, NHEQF was expected to be in alignment with NSQF, which is already in existence in India somewhere in 2013-14 only. So once we understand NSQF, it is very easy for us to understand NHEQF, because aligning aligning the qualification descriptors as per NSQF is what is NHEQF document is. So let us understand what this NSQF is. Now, if we again go to NEP 2020 vision document, which is based on policy document, the vision document very clearly states that NSQF will be detailed further for each discipline of vocation as well as profession. Second vision statement is Indian standards will be aligned with international standards of qualifications, classification of occupations
maintained by International Labour Organization, and this framework will provide the basis for recognition of prior learning. So this is a very important vision statement of NEP we as an implementer should understand. Remember one thing, taking into international all organizations, Indian all professional associations. So they have prepared 36 sector skill council for all types of professions and occupations in India. You name any occupation, you will find it comes in one of the sector, and through them, complete standard classification of occupations is done. Each position, each job role, each task what a person is expected to do. So job role they have identified. So if we again recall our few minutes back discussion, we have to prepare the student for their job roles. How do we know job roles? That job role identification part is already done by through standardization procedure. So job roles, whatever our student after graduating certification, wherever they will go, their job roles are now well defined. And for that, recognition of prior learning, that is one job we as a teacher have to do. Second vision says that dropouts will also be reintegrated by aligning their practical experience in relevant level of framework. So this is important takeaway for our today's discussion. Presently in our higher education system, the students we get are 10+2, that is 12 standard. Now, when NEP will be implemented in school, two things we have to understand because that is the input for our higher education. First thing, 10+2 will not be there. It will be 5+3+3+4 type of system. It means after 10, there will not be classification of student like science stream student, art stream student, or commerce stream student. All students will learn all subjects up to 12. And those students, and they will be called as level 4. One type of input to higher education. Second is those who have not gone for formal systems, probably dropouts from school. Somebody has dropped out from 8. Somebody has dropped out from 10. But has taken some experience. Some candidate works in his father's or her father's restaurant, or his or her parents' maintenance workshop, automobile workshop, or he's doing some job. So his learning will be recognized by some competent authority. And if that student has achieved the level 4 after assessment and evaluation by competent authority of non-formal, means who has not done formal schooling up to 12, but his level or student's level is recognized as level 4. So even without 12th, a student will be able to enter into higher education system. This is the important takeaway, and that is why this framework will work over there. And second, the credit-based framework will facilitate mobility of student from general to vocational and vocational to general. So this is how the integration will take place. So this qualification framework will be in association with credit-based framework. So both will go hand in hand. So to understand the complete framework, we have to understand qualification framework as well as credit framework, and then curricular framework will come into picture, which we will be doing. So what is expected in NEP? That our education system, higher education system, will have this type of network, or you can say framework, under which we will be operating. Our teaching will happen, learning will happen. Institutions will be working under this 4 framework. First will be National Higher Education Framework, which will be based on NSQF. We will understand within few minutes NSQF and NEQF. We will have choice-based credit system. And to support these 3 things, we will have to change our teaching learning practices. So new types of teaching learning practices will come, new types of assessment matrix will come, assessment, you can say, rubrics will come,
and we will have to assess, evaluate student in 3 domains with some innovative practices. UGC has already come out with teaching methods as well as assessment practices. So we will be operating under this broadly 4 walls, I will say, of operations. Now let us understand very quickly what NSQF is. Now NSQF, as I told you, it is already was there before NEP was framed. So somewhere 2014, 13, 14, NSQF was accepted by government, union government, and it has come out as a framework. Now it organizes, now we know framework is structuring. So depending upon level, so it is on knowledge, skill, and aptitude. Again, friends, you will find 3 domains everywhere you will find. So we have to give attention to all 3 domains, and depending upon the outcomes, measured outcome, assessed, evaluated by competent authority, the levels are arranged on the basis of outcomes in knowledge, skills, and aptitude domain. And these levels will be defined in terms of learning outcome, which learner must possess regardless of whether they were acquired through formal, non-formal, or informal learning. A very important change which will come as far as our admissions and students entry and their classes or their course curriculum, selection of subject. If there will be some student from formal education background, some non-formal or even informal. NSQF is a assurance framework. So nationally integrated education and competency-based skill framework. So NSQF is a competency-based framework which will provide multiple pathways, horizontal as vertical. So multiple entry, multiple exit, vocational training, general education, technical education. It will be a complex, you can say, of multiple pathway. This framework provides the guideline how to solve this complexity. Remember one more thing, friend. These levels are not discrete. They are in continuum. So one level of learning is linked with another higher level of, you can say, learning, and it will enable person to acquire desired competency level, go to the job market, again at proper opportunity, he can return, acquire additional skills, further competency, again go to the job market. So multiple entry, multiple exit. So that framework is based on this qualification framework. So what is expected in NEP? The summary is National Skill Qualification Framework will be detailed for NHEQF, and it will be compatible with National Occupational Standard and international compatibility of the standard. So international compatibility and standardization of occupational work job roles is achieved through this NSQF framework and standards. So there are 5 key elements of NSQF which are aligned again in NHEQF. It is the recognizing of skill, proficiency, and competencies at different levels. So this is the first principle, recognizing the proficiency and competency leading to international equivalency. So this has globalization, standardization. So our levels, whenever they will be recognized, they have to be at par with international equivalency. There will be multiple entry exit between vocational, skill training, general education, technical education, and job market. So first time you will find that job market has become a part of higher education system also, and progression pathway will be defined under this skill qualification framework. Partnership with industry and employer. See our institute's role and teacher's role. Now we will have to partner with industry and employer to understand their job role, to get our student verified about their competencies from them, and we have to provide opportunities for lifelong learning and skill development. It has to be a transparent and accountable and credible mechanism, because for various sectors and international acceptance, credibility and accountability, that is how the foundation of NEP is accountability. Here accountability will come about our
qualifications which we are giving to our student. Of course, objectives are also there. We will skip some of the time because we have to understand. So there are some keywords: skills, qualification, recognition of prior learning, national occupational standard, qualification pack, curriculum pack, sector skill councils, and levels of NSQF. Skills are described in cognitive, that is use of logical, intuitive, and creative thinking, or practical, involving first domain, second domain, as well as the second domain talks about use of method, material, tools, as well as behavior. So skills will be defined in all three domains. Qualification will be formal outcome, and recognition of prior learning is important process of NSQF. NOS are nothing but measurable performance outcome. What a person is expected to do a job, that is job role. Job role, which is already identified by government, international standards, and association of industries. So what when a student goes and joins any profession or occupation, what at that level the student is expected to perform is called as national occupational standard, and all job tasks together is called as qualification pack. All qualification pack together becomes a curriculum pack. So there are sectors and sector skill council, and important part just to take away that it will be NSQF organizes structured way of qualification depending upon the levels of knowledge, skill, and aptitude in a series. Lowest level, complex, all these three will be lower, highest will be on top. Now they will be having descriptor like Dublin descriptor. So this each level will have descriptor. According similar to Dublin descriptor, NSQF has also accepted, you can say, 5 descriptor and 10 levels. Lowest level of complexity is level 1, and highest level of complexity is level 10. And they are structured depending upon learning outcomes, volume of learning, notional time taken to acquire qualification. So these are the parameters on which structuring is done. And the level descriptor, which is more important because each level will have description. So as similar to Dublin, here also there are 5 domains. The domains are process, professional knowledge, professional skill, core skill, and responsibility. NHEQF has also adopted these level descriptors similar to NSQF. Now, process is the, you can say, a general summary of remaining 4 domains. Professional knowledge, depending upon level, it is described in terms of depth, breadth, and kinds of knowledge and complexity. Now, depth of knowledge can be general or specialized. Lower level, it will be general. As the level goes up, the depth of knowledge in a specialized area will go on more and more. Same is the case with breadth and complexity. From level to level, it will go. Third description is professional skill, means what a learner should be able to do. So second domain. First was cognitive domain. Now we are talking about psychomotor domain. So cognitive creative skills and use of intuitive and logical critical thinking. That is what the level professional skills competencies will be measured. Communication skills and interpersonal skills. So this is from third level, you can say domain, behavioral domain. So this is for professional skills, core skills, IT skills, then instruments, performing jobs, and most important, fifth, you can say descriptor is the level of responsibility which a learner can be entrusted with. Friends, let us again understand. We have to first understand these 5 qualification descriptors, and we have to prepare our student according to these 5 levels. Suppose it is lower level, whether student is responsible for his own work, or to what degree of supervision he will be needed. Can he will supervise others, or will he need supervision? Depending upon that, the level will be described, and it determines the nature of working relationship, level of responsibility of self with other, managing the change, and accountability for action. So on these 5 descriptors, levels, you can say
qualifications will be given, and the levels in case of NSQF are for, of course, up to 4 is school, and for higher education in case of NSQF are from level 4 to 10. In case of NHEQF, they are from 4 to 8. Level 4 will give certificate 6 months, 30 credit. Remember, this is NSQF, not NHEQF. NHEQF has slightly changed it. Diploma will be level 5, advanced diploma will be level 6, BWOC degree will be 7, PG diploma will be 8, MWOC will be 9, and research will be level 10. Now, depending upon, say, level 5, these are 5 domains, and requirement descriptors are very clearly mentioned what is expected as a qualification descriptor for each level. In case of NSQF, certificate level in all 5 domains it is given. Diploma level is all 5. Even for degree it is given. And on the basis of NSQF, now NQF and NSQF, in alignment with international standard, UGC and Government of India has come out with NHEQF. And this is what we have to keep in mind when we prepare our syllabus, design our syllabus, or we deliver our syllabus. NHEQF has to be kept in mind. Now, NHEQF is based on NQF and NSQF only. Here, the levels are in continuum of the qualification. In case of NSQF, it was 4 to 10. In case of NHEQF, they are from 4.5 to 8 for higher education. 1 to 4 are in for school education. Now, every qualification will be described by learning outcomes or qualification descriptors. The fundamental characteristics are similar to NSQF only. I will not repeat. The purpose of NHEQF is, most important part is, what is the purpose, is to maintain national standard, international comparability of learning outcome and academic standard, to ensure global competitiveness and to facilitate student national and international mobility. So this is the main purpose. There are 7 purposes given, but main purpose is the student, when we say degree of X university, it will be comparable with degree of any other university, not in our India, but internationally. So making it comparable and standardization, this framework will be followed. And it will be the points of reference when setting and assessing academic standard, designing curricula, teaching learning, assessment, and periodic review of program. So why should I know about national occupation qualification, you can say, framework? Why should I know NSQF? Why I should know NHEQF? Because it will be the point of reference for not designing our curriculum, delivering our curriculum, assessing our student, and setting standard also. So that is why we have to understand NHEQF. So let us go to the levels and qualifications. Now, in case of NHEQF, here level starts from 4.5 to 8. 4.5 is undergraduate program. It will be of 2 semesters. In case of NSQF, it was 6 months. Here it will be 1 year or 2 semesters program. Level 5 will be of first 2 years. So a student exit after first year may get certificate. If a student exit after second year, will get diploma, but he will have to complete duration of first 2 years, that is 4 semesters, minimum credit, minimum hours of learning, and minimum skill enhancement course. And if he goes to third year, it will be level 5.5. So earlier, we used to talk about first year, second year, third year. Now we will be talking about levels 4.5, competency level 5 and 5.5. According to that, qualification will be available, and they will be based on assessment and evaluation of descriptor. Level 6 will be 4 years degree, honors with research or honors degree. 6 will be postgraduate diploma. 6.5 will be master's degree.
say MA, MCom, MSc, either 2 years after 3 years degree or 1 year after 4 years degree. 6.5 will be again master's degree, one year after 4 years degree program. 7 will be for master's degree like BE, BTech, 4 years undergraduate program, and level 8 will be PhD or doctoral program. So our higher education will have now levels from 4.5 to 8 level, and at each level assessment, evaluation, and attainment of learning outcomes and graduate attributes will be ensured, and according to the level, certification will be done. Now, as I was saying, graduate attributes are most fundamental part in case of now higher education, you can say our institution. So all of us must understand first the graduate attributes. Who gives a graduate attributes? Who gives program outcomes? It is national bodies, statutory bodies in association with global standardization. They have already provided the graduate attribute. Now throughout country, every higher education institution will have to keep eye on these 12 or 18 graduate attributes. Now, these attributes are relevant to three domains of education. Slides I will share, I will not read it because time is running out. But you will find that complex problem solving, critical thinking, creativity, communication skill, analytical reasoning, thinking, research related skill, coordinating, collaborating with others. So third domain, affinitive domain, leadership readiness, how to learn skill, digital technological skills, value inculcation. So these are the various components of environmental awareness, action, autonomy, responsibility, community engagement, empathy. So these are the, you can say, descriptors or graduate attributes or program outcomes. Every institution in the country, every university in the country will have to ensure that the graduates of their degree program or at level, any level, will map with these attributes. So this is the standardization which will take place. Now, once program outcomes or graduate attributes are there, second is learning outcome descriptor. Whatever program a student is learning or we are offering, we have to very clearly define the learning outcomes along with the descriptors for the program. Now, these learning outcomes will be in all three domains: cognitive domain, psychomotor domain, and affective domain. And in case of, you can say, cognitive domain or knowledge or understanding, you will find that level 4.5 undergraduate certificate, level 5 diploma, or level 5.5 bachelor's degree. I will just refer only three levels to begin with for paucity of time. You will find that expected learning outcome of level 4.5 or undergraduate program, you will find that it is a processes in broad multidisciplinary learning context with chosen field of learning, or it will be the understanding of linkages between learning areas across chosen field of learning. But as level changes, you will find that it will be the deeper knowledge and understanding of one of the learning areas. So now learning outcome is changed. And when it comes to bachelor's degree or level 5.5, you will find comprehensive, factual, theoretical, and specialized knowledge in broad and multidisciplinary with depth in understanding principle. So from basic fundamental knowledge to the comprehensive, depth, and specialized knowledge, as the level changes, the domain of remains same, but the expectation learning outcomes in that domain changes as we go higher and higher from level 4.5 to 5, from 5 to 5.5. It will further change as we go from 5.5 to 6, 6 to 6.5, and up to research 8. If we talk about psychomotor or skill domain, you will find application of the knowledge. This is the skill domain. Expectation of level 4.5 will be different. It is about generating the solution to specific problem,
relating to chosen field. While it goes to level 5, you will find the selecting and applying the basic methods in a specialized and theoretical knowledge area, and to formulate solutions. Earlier, what? To information to generate the solution, that is certificate level. Now, from certificate level student, you will get information, but you as a diploma level, you will have to formulate the solution to the problem. And if you go to further higher level, you have to have different approaches, and you have to employ the right approaches to generate the solutions related to various allied areas also. So even though it is only of application part of knowledge and skill, methods and processes, but as you go from certificate level to diploma and diploma to degree, the learning outcomes will be different, and according to that, we will have to measure. What is the takeaway, friends, for this from us? So if I am setting a question paper for, say, level 4.5 course, my questions, because I will have to map it, my assessment will be on this learning outcome, same subject. If I am talking to a diploma, second level, it will be my question and assessment will be different. And if I go to the higher level, 5.5 degree level, again my assessment will be having a different touch. And this has to be mapped, and then only certifications or accreditation or recognition to our institution or university will come. So that is why it is very important for us to understand the level. So I may say that undergraduate certificate is my level 4.5, so first year course, and 5.5 is third year final year course. But expected learning outcomes in all three domains will be different. Say in case of, again, skilling domain, expected is skill required to perform and accomplish tasks. That is the attribute which is to be there. But you will find that in case of certificate, the student is expected to have cognitive or technical skill required for selecting and using relevant methods, tools, and materials. While at diploma, he will be expected to generate some information, not only using. And in case of, you can say, degree, he will have to able to apply for other problem solution, not only for a specific problem, but if some other problem comes, so the student should be able to apply or perform the task or similar pattern that student should be able to generate as the level is changed. Now, employability skills and entrepreneurship skills. See, this is very important for us. We may say that I have got a batch of students who have passed from my college as graduate, but you will find that some student will get absorbed equivalent to very lower job, which a certificate level student can also get. Some student may get supervisory job, or some student may get higher job also. Why it will happen? Because competency will show that a student is having the knowledge, skill, and attitude of certificate level, even though institute is giving him degree, because it will be assessed by some competent authority. So what is the takeaway for us? Our system will get now, you can say, equipped so that the assessment, evaluation, and you can say performance of the student will be according to the well-defined learning outcomes, which will be based on our attribute. So we will have to reorient ourselves. We must understand program outcomes. From that, we must understand learning outcome. From that, we must understand course outcome. And this is what, once we have understood all outcomes, we will have to design assessment and evaluation system for which level, whether that student is for certificate level, diploma, or degree. According to that, our assessment method, our questions, our, you can say, way we will evaluate the student, because it will be mapped, and then only that certification will become valid.
Same thing will happen with affective domain also, constitutional and humanistics and ethical moral values. So in all three domains, student will have to demonstrate the acquisition of attribute. This is the fundamental principle of, you can say, qualification framework. Let us very quickly go through credit framework. Now, credit framework as per NHE will be 1200 learning hours in 1 year, which will entail student to get 40 credit. So, students' workload for 1 year will be of 1200 learning hours, and for successful 1200 learning hours after assessment by competent authority, credits earned will be 40 credits per year. So for per semester, it will be 600 hours and 20 credit. Why it is necessary for us to understand this credit framework? Because when we will design our syllabus, our semester should have minimum 600 learning hours, minimum 20 credits, and our assessment should be for those 600 hours and 20 credits. So national credit framework is more important part is it is a function of achieving the desired learning outcome for a program, for a course, for a training determined by successful assessment. So credits are earned only after successfully the student gets successful in the assessment, then only credits are earned. And credits are based not on marks but on learning hours. So from where the student can earn the credit, the National Credit Framework says it can be earned by completed academic education, by undergoing vocational education, training skill, or by experiential learning with professional levels required. For every 1200 hours of learning, student can earn 40 credit on successful assessment, and credits are converted into credit points. So this chart is given, and last is finally the curriculum framework. So just 1 minute going back, we have understood the domains of education. We have understood the levels in each domain. Understanding domain and level, we have understood national qualifications and national qualification framework, national skill qualification framework, national higher education qualification framework, national credit framework, and this will be converted into curriculum framework, which as a university or institution or as a teacher we do. It will be based on learning outcome. UGC has come out with document of LACF also. We know the verticals of NEP UG curriculum will be major, minor, courses on Indian knowledge system, internship, field-based learning practices, vocational and skill enhancement. So all verticals will essentially will be the part of any UG curriculum, and UG curriculum will based on outcome based. So first will be graduate attributes, that is program outcome. Program outcomes are given by our statutory bodies like NAC, NBA or UGC. So first we have to keep in mind those graduate attributes. Those graduate attributes will be uniform for all the universities in the country, and they are aligned with international standards. So that standardization of international and national is done at graduate attributes. These attributes are all for all three domains. On the basis of that, learning outcomes are given. UGC has given, or we as a university have to give. Learning outcomes are after getting degree from the BA. So what will be the outcomes we are assuring? From those two things, every course which is taught to the student, we have to define course outcomes or course learning outcomes. And the key outcomes of curriculum planning will be learning outcome based curriculum will be the framework based on expected learning outcomes. And these expected learning outcomes are based on program outcome. Program outcomes are graduate attributes. They are based on the job profile, which a student will be expected to do. A student may go for higher education. So what is expected for higher education? That we have to keep in mind.
Student may go for job, we have to keep that in mind. Student may go for self-employment, that has we have to keep in mind. And on that basis, learning outcomes have to be jotted down. And on the learning outcomes and standards, that has to be attained by graduates of program and study and holder of qualification, that is standardization. That standard will be national standard and global standard. And those national and global standard will be, you can say, described in the descriptors like graduate attributes, qualification descriptors, PLOs, and CLOs. So on that basis, implementation of NEP will be done. I have exceeded 5 minutes. I six, you can say, apologize for exceeding my time by 5 minutes, but we will keep another 5-10 minutes for our, you can say, discussion if any question. Let me express my sincere thanks to all learned, distinguished participants, very highly learned people I find in my audience. I feel privileged to interact with you people. I am thankful to our UGC HRDC team because they are really doing excellently well job in Amravati University, that center, Mahamana Malviya Training Teachers Training Center. I am thankful to Registrar, Pro Vice Chancellor, our Dr. Atik sir, and Chancellor sir. Thank you very much. Thank you so much, sir, for such an enlightening session. And participants, there are 5 minutes because we have to go for another session. The forum is open for discussion and the question. If you have any queries or question, you can directly ask to Professor Marathi, sir. Please. My PPTs will be available. I request our UGC. Yes, sir. I will share. I will share, yes. Sir. I will. Even my contact number, please share so that if later on anybody has got any doubt. Yeah, definitely, sir. I will in our WhatsApp group, sir. Yes. Definitely, yes. sir. Yes, participants, is there any questions? Sir, I think there is no questions Thank you. from participant sides. Yes, sir. So shall we conclude, sir? Yes, thank you. Thank you very much, everybody. Thank you very much. Thank you, sir. On behalf of the UGC Malviya Mission Teacher Training Center, it's an honor and privilege to extend a heartfelt gratitude and sincere thanks to Professor Marathe sir for gracing us with an incredible, enlightening, and insightful session on the skill development and outcome-based education with the special emphasis on the national education policy. Sir, your expertise and profound knowledge have illuminate our understanding of the critical facets of the education in the today's dynamic world. Your comprehensive breakdown of the skill education and the outcome-based education, coupled with in depth of analysis with the framework of NEP 2020, has provided us with the roadmap for the fostering a more holistic and impactful educational ecosystem. And so, these few words, I again express my heartfelt gratitude and sincere thanks to Professor Marathe sir. And with the kind permission of Marathe sir, I would like to declare that this lecture will be over here and we will continue for the next lecture. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, participants, our next speaker will join with us within 1 or 2 minutes. So there are some couple of instructions for each and everyone. As far as concerned with the program mandate, there will be a qualifying test. Each and every participants have to appear for that qualifying test, and that test will be held from tomorrow morning. Okay. So there will be a simply Google form, and there will be a 50 questions based on the various aspects and the dimension of NEP, and that form will be available for 24 hours. So we will solve that test, and it is compulsory for each and every participant to appeal for that test. 1 minute.
Okay, so friends, our speaker has joining with us. We'll wait for only 1 minute. I think there is some technical issue. So there will be a test that is launched by tomorrow morning near about 11 to 11:30. I will post the link in our WhatsApp group, and every participant has to appear for that test, because without appearing the test, you will not awarded with the certificate. So it is very mandatory to solve that test or to appear that test. Okay. And second thing is that I have found that some of the participants are yet not uploaded their nomination letter, their ID card, their ID cards, and their photo in MMC portal. Two more thing that is important thing, you have to upload your letters, ID card, institutional ID card, and your photo in what in MMC portal. So without these are the two mandatory conditions for upload. That is uploading your document, consent document, that is ID card, and photo and the nomination letter in the MMC portal. And another thing is that you have to solve that test for earning the certificates. Okay. So we will wait for tomorrow. Yes, friends, our experts have joined with us. Hello, Professor Joshi, sir. Yes, please. Yes, sir. Good afternoon, sir. So, if you could permit, can we start, sir? Am I audible clear? Yeah, sir. You are clearly Okay, audible. okay, okay. Clearly audible. So, if you could permit, shall Okay, we okay. start, sir? Yes, yes. We will start. So, friends, again, good afternoon to all. And in today's session, in the next lecture, we have invited Professor Parag Joshi, sir. Sir, warm welcome you on behalf of the UGC Malvi Mission Teacher Training Center, Sant Gadge Baba Amravati University, to this flagship program, that is NEP 2020 Orientation and Sensitization Program, launched by the Ministry of Education, run under the University Grants Commission. So, friends, Professor Parag Joshi, sir, is presently serving as a professor at Department of Sanskrit Literature
in Kavi Kulguru Kalidas Sanskrit University, Ramtek, that is situated in Ramtek, Nagpur. Sir has more than 15 years of the teaching experience as well as the research experience. Specifically, sir is a master trainer for the Indian knowledge system, and sir is also serve as a OSD of the Vice Chancellor in present position. Sir has received many more award from that. Some of the award is the best and dynamic student award. Sir is the gold medalist also, and sir has received the Yuva Ratna Puraskar also, Vag Bhushan Puraskar also from the different agencies. There are n number of puraskars or the awards are received by the sir, and sir has also published and some books and DVDs also. So with brief introduction, sir will conduct a session, not a session, it is an interactive session that will be that will be based on the very crucial topic in and NEP has provided more emphasis on the Indian knowledge system. So sir, I again warm welcome you and request you to start with a session. So please. Okay, thank you everyone. And first of all, let me convey my thanks to the organizers, Atik sir, and all other authorities of the institution and university for inviting me into this gathering of stalwarts. I think moreover 120 lectures are Yes sir, near present here about for this. 50 to 50 or 60 participants are joined through YouTube also sir. Oh, that's very nice. So around 200 listeners are kindly cooperating me, and they are bearing my words now. Okay, I was just going through the list of participants to know about the media that they will be preferring for this lecture. So I think most of them are from Maharashtra background. So if they are willing to continue this talk in Marathi or Hindi, so let me know. Else we will be continuing in English for the convenience of all others who may or may not join the know the Marathi. Sir, it is So specifically in Hindi, if it's possible, sir, please. okay. So as per the requirement of the participants, it's a good thing. So नमस्ते सभी को. उद्घाट्य योग कलया हृदयाब्ज कोशम धन्यैश्चिरादपि यथा रुचि गृह्यमाणः यः नमस्ते सर. प्रस्फुरत्यविरतं परिपूर्ण रूपः श्रेयस्समे दिशतु शाश्वतिकं मुकुंदः. नमस्ते सर, और सभी सहभागियों का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं. और मेरे वक्तव्य को मैं शुरुआत करूंगा आपकी अनुमति से. कुछ क्षमा भी चाहूंगा कि एक 5-10 मिनट उस टेक्निकल पैच में गए जिसमें जुड़ने के लिए मुझे कुछ देरी हो गई, लेकिन उस समय को अधिक अन्य विस्तार पूर्वक प्रस्तावना को न लेते हुए मुख्य विषय पर आकर ही हम आज इस विषय की शुरुआत करते हैं, जो निर्धारित समय में आप सबको कुछ मैं बता पाऊं और आप सबसे भी कुछ सीख पाऊं, ये इस आज के मेरे वक्तव्य का मुख्य अंश रहेगा. तो भारतीय ज्ञान परंपरा इस विषय को लेकर आज शैक्षणिक क्षेत्र में जिस प्रकार से विभिन्न गतिविधियां और क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, उसके अंतर्गत आपके इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम रिफ्रेशर कोर्स में भी एक सेशन भारतीय ज्ञान परंपरा पर आपको लेना है, इस प्रकार से सूचना मुझे प्राप्त हुई. और मैं आनंद के साथ आप सब लोगों से आज जुड़ा हुआ हूं कि इस विषय को जानना आज की स्थिति में सबको इसलिए जरूरी है क्योंकि दो उसके मुख्य अंश है कि आगे जाकर एनईपी इम्प्लीमेंटेशन के तहत जो बहुत सारी दिक्कतें अन्य अन्य विषयों को लेकर आ रही है, उसमें से एक यह भी विषय है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द आईकेएस थ्रू एनईपी 2020, बिकॉज इट्स अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ एनईपी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि उसमें लगभग मिनिमम 4 से लेकर 12 क्रेडिट तक कोर्स डिजाइन करके आईकेएस के ऊपर आपको आपके महाविद्यालयों में और आपके शैक्षिक संस्थाओं में चलाने हैं. तो इन सब
के साथ साथ अन्य और भी नए बहुत सारे विषय अभी एनईपी के अंतर्गत हम जान रहे हैं, जिनको हम क्रियान्वित करना चाहते हैं। तो इस क्रियान्वयन से पहले अगर इन विषयों का सुष्ठु और एक सुंदर परिचय हमें प्राप्त हो, तो जो मूल उद्देश्य होता है उस उद्देश्य तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहूंगा कि बहुत जगह पर अन्य अन्य कैंप्स या जो क्रियाकलाप आयोजित किए जाते हैं, उसमें एक ना एक फनी टास्क होता है, एक उसको क्या बोलेंगे, एक एकेडमिक गेम के माध्यम से भी एक वो विषय किया जाता है। शायद आपने बहुत जगह पर वो सुना भी होगा, देखा भी होगा और शायद उसको खेला भी होगा कि कोई एक व्यक्ति उसमें दूसरे व्यक्ति के कान में कुछ विषय बताती है, उसको उस पास ऑन आगे करना होता है, और ऐसे एंड व्यक्ति तक, मतलब अगर उसमें 30 लोग जुड़े हुए हैं तो 1 2 3 से लेकर एंड व्यक्ति तक अगर आप उस वर्जन को चेक करते जाएंगे तो नंबर 1 व्यक्ति ने कहा हुआ वाक्य जो होता है और नंबर 50 पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है उसका जो वाक्य होता है, उन दोनों वर्जन्स को आप देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। शायद ये भी होता है कि बहुत बार मूल जो वाक्य उस व्यक्ति ने कहा या मूल वाक्य की शुरुआत जहां से हुई, वो वाक्य ही अपना अस्तित्व नष्ट कर लेता है और उसकी जगह पर कुछ और ही वर्जन वहां पर हमें सुनाई देने लगता है या दिखाई देने लगता है। इस उदाहरण का प्रासंगिक इस विषय के संदर्भ में क्या औचित्य है, तो ऐसे ही भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इस प्रकार की एक शुरुआत अभी जो हो रही है, उस शुरुआत का जो मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य को एनईपी क्रियान्वयन के माध्यम से, विभिन्न उच्च प्रगत शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से समाज तक, छात्रों तक और अपनी जीवन शैली तक पहुंचाने के लिए जो मूल उद्देश्य बनाया गया है, उसमें ये अपडेटेड वर्जन्स अभी आने शुरू हो जाएंगे। धीरे 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 दूसरा व्यक्ति तीसरे को, तीसरा व्यक्ति चौथे को, चौथा व्यक्ति पांचवें को जब ये बताते जाएगा, तब बहुत बार आनंद के साथ, बहुत बार अनिवार्यता के कारण, बहुत बार अनास्था के कारण, बहुत बार कुछ अनुत्साह के साथ अगर हम उन वर्जन्स को आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, तो शायद उस कथा की तरह, उस उदाहरण की तरह इसका जो मूल उद्देश्य है या जो मूल वास्तविक स्वरूप है वो पहुंचे ही नहीं। और इसीलिए अगली वर्ष से जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एनईपी का पूरे तौर से क्रियान्वयन जो होने जा रहा है, जिसके अंतर्भूत विषयों में से एक भारतीय ज्ञान परंपरा का विषय है, उसको सभी अध्यापकों तक अच्छी तरह से पहुंचाने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया जाता है। तो इस मुख्य वक्तव्य के जो 4 बिंदु होंगे उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्तव्य में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा कि इस भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में आपकी संकल्पनाएं क्या है और इसका एक जो वास्तविक स्वरूप अपेक्षित है, जो पॉलिसी मेकर्स है या जो भी कुछ हमारी ज्ञान परंपराएं अभी प्रासंगिक दिखती है, वो किस प्रकार से आगे जानी चाहिए। तो इन दोनों में जो अंतर है, उस अंतर को कम करते हुए आप लोगों के साथ चर्चा के साथ इस विषय को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो हम इस प्रकार से इंटरैक्टिव सेशन के माध्यम से इस विषय को आगे लेके चलते हैं। मेरा पीपीटी शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, ऐसे मैं सोचता हूँ। कोई अगर मुझे कमेंट में या फिर माइक ओपन करके रिप्लाई दे तो पता चलेगा कि हाँ सर, दिख इज रहे इट हैं। विजिबल। हाँ, ओके यस सर, ओके। यस सर। और हम एक काम करते हैं कि एक ये ऑनलाइन सेशंस में कुछ ड्रॉबैक्स ऐसे भी किए जाते हैं कि शायद मैं अकेला ही गीत गाते जा रहा हूँ, ऐसे लगता है, वो चल रहा ही अकेला, इस प्रकार का ना हो। इसलिए बीच में अचानक से इंटरेक्शन करूंगा तो आपका भी व्यवधान नष्ट हो सकता है। तो शुरुआत में हम कुछ अंश को लेकर चर्चा करते हैं, प्रतिपादन करते हैं और उसके बाद हम सवाल जवाब के माध्यम से इस विषय को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। तो मेरे प्रस्तुतिकरण को मैं पहले आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, उसके पश्चात इस विषय को
आप तक पहुंचाने के लिए जो भी उदाहरण है वो देकर इसका विषय उपस्थापन करूंगा, और उसके बाद हम चर्चा और प्रश्नोत्तर के साथ इस वक्तव्य को या इस कालांश को समाप्त करेंगे। तो I will be majorly speaking on the importance and relevance of the IKS Indian knowledge systems. भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसे हम IKS के नाम से आज जान पा रहे हैं। तो इस वक्तव्य या इस चर्चा को शुरुआत करने से पहले कुछ प्रश्नों के साथ में आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न करना चाहूंगा कि व्हाट इज IKS, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ IKS टुडे, व्हाट इज द प्लेस ऑफ IKS इन NEP 2020 एंड व्हाट इज इन इट फॉर मी। ये मुख्य 4 प्रश्न अगर आपके मन में या आपके मन में ये 4 जिज्ञासाएं हैं तो आप इस वक्तव्य से कुछ प्राप्त कर पाएंगे। और साधारण रूप से इन 4 विषयों को मन में रखकर ही हमें इस कालांश के या वक्तव्य के विषय को देखना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा, व्हाट इज IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम। क्या ये कोई विशिष्ट भाषा है, या कोई विशिष्ट ग्रंथ राशि है, या कोई एक ज्ञान साधना का मार्ग है? व्हाट एग्जैक्टली इज IKS। और इसके साथ साथ में आज ये समझता हूं कि व्हाट इज नॉट IKS, ये भी बताने का एक समय आ गया है कि क्या भारतीय ज्ञान परंपरा है, क्या उसमें अंतर्भूत होता है, और क्या ऐसे विषय है या कौन से ऐसे विषय है जो भारतीय ज्ञान परंपरा में अंतर्भूत नहीं हो सकते हैं। क्योंकि उसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए, नहीं तो समवेयर ये जो एक मोमेंटम शुरू हो गया है, उस मोमेंटम के अंतर्गत फिर बहुत सारे अन्य अन्य विषयों को भी एक साथ एक के दूसरे के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ने से वो क्यूआस ज्यादा निर्माण हो सकता है, उसकी ज्यादा संभावना है, और कहीं जाके फिर वो उस विषय का अपना मूल स्वरूप न्याय उसको हम न दे पाए, ऐसे भी हो सकता है। तो इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपराओं के बारे में जानने के साथ साथ उसमें क्या अंतर्भूत हो सकता है और क्या विषय उसमें अंतर्भूत नहीं हो सकते हैं, इसको भी जानने के लिए आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि UGC has published guidelines for the implementation of IKS in undergraduate program. So all of you, you must go through it before implementing it in your colleges or the institutions where you are teaching the subject. तो सभी छात्रों को अनिवार्य होने की वजह से लेट इट बी कि आप केमिस्ट्री से बिलोंग करते हो या और कोई सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, ह्यूमैनिटी या साइंस या कॉमर्स, किसी भी फैकल्टी या सब्जेक्ट के हो, अभी सभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में इस प्रकार के कुछ अनिवार्य विषय जो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उसमें से ये एक होने की वजह से इन सभी विषयों के बारे में एक मार्गदर्शक सूचनाएं UGC द्वारा प्रकाशित की गई है। उनमें से एक ये भी है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के विषयों का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जा सकता है, उसमें क्या क्या अवधारणाएं मुख्य रूप से होनी चाहिए, उनके क्या उद्दिष्ट है और किस रूप में उसको प्रस्तुत करना चाहिए। तो उसमें क्रेडिट सिस्टम से लेकर कोर्स कंटेंट को लेकर कोर्स डिजाइनिंग से लेकर IKS मतलब भारत की संकल्पना, काल मर्यादा, क्रोनोलॉजिकली, वो बहुत सारी चीजों के ऊपर उन्होंने चर्चा करते हुए कुछ गाइडलाइंस दी है कि समवेयर 18th सेंचुरी तक, 19th सेंचुरी तक भी ज्ञान परंपराएं जो आई थी, जो अन्य अन्य प्रांतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हुई थी, उनका भी स्वीकार हम भारतीय ज्ञान परंपराओं में कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आधुनिक काल का कोई विषय उसमें दिखाई देता है तो उसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत नहीं ले सकते। इस प्रकार की बहुत सारी सूचनाएं हैं। तो इसीलिए व्हाट इज IKS एंड व्हाट इज नॉट IKS ये जानना भी सबसे जरूरी होता है, जिसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और उसकी क्या आज प्रासंगिकता है और NEP क्रियान्वयन की दृष्टि से उसका स्थान क्या हो सकता है पाठ्यक्रम में। और आप हर एक व्यक्ति अन्य अन्य विभिन्न विषयों से जुड़े हुए होने के कारण आप लोगों को उसमें क्या मिल सकता है, इस प्रकार के प्रमुख 4 अंशों को लेकर हम चर्चा करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा, अभी भारत की सभ्यता और संस्कृति का अगर ऐतिहासिक अध्ययन किया जाए तो इसका मूल
अति प्राचीन काल तक प्राप्त किया जाता है। बल्कि ऐसे कह सकते हैं कि विश्व की अत्यंत प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के रूप में भारतीयता को देखा जाता है कि विश्व में जब भौतिक साधनों को लेकर उनके उद्गम, विकास और निर्मिति के पीछे जब लोग लगे हुए थे, तब भारतवर्ष मुक्ति मार्ग की ओर प्रस्थान करने के लिए बहुत बड़े बड़े विचारों को लेकर चिंतन करने में मग्न था। और शायद इसीलिए भारतवर्ष की महिमा का गुणगान करते हुए बहुत सारे विषयों का जो अंतर्भाव किया जाता है, जिसमें है हमारा कल्चर, जिसमें है हमारी सिविलाइजेशन, सभ्यता, संस्कृति और भी अन्य अन्य विषय है। तो इन सब विषयों का गौरव और अभिमान जो हम प्राप्त करते हैं, उन अभिमान और गर्व के जो कारणीभूत अंश है, वही अंश मूल रूप से इस भारतीय ज्ञान परंपरा का विषय हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स नॉलेज सिस्टम, टेस्टेड इट थ्रू प्रैक्टिस, वेरीफाइड इट एंड इम्प्रूव्ड इट ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि कुछ विषयों का प्रतिपादन करके या कुछ ज्ञान ग्रंथों का लेखन करके वो परंपरा बन जाती है। परंपरा इस शब्द से ही हमें ज्ञात होता है कि चिरकाल से, प्रदीर्घ काल से जो विषय वस्तु, सभ्यता, संस्कृति हमारे समाज में चलती हुई आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो विषय वस्तु, सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, उसे हम परंपरा के रूप में स्वीकार करते हैं। तो उसी प्रकार से भारतवर्ष में हजारों वर्षों पूर्व बहुत सारे ज्ञान के विषय प्रतिपादित किए गए। उन ज्ञान के भिन्न भिन्न विषयों का परीक्षण किया गया, और वह परीक्षण प्रैक्टिसेस के माध्यम से, मतलब उसका अवलंब करके, इम्प्लीमेंटेशन करके, उसकी अनुभूति के माध्यम से, थ्रू द प्रैक्टिसेस, फिर उस प्रैक्टिस का जो प्रकार हो वो भिन्न भिन्न तरीके का क्यों ना हो, लेकिन उसका परीक्षण निरीक्षण करने के पश्चात जब उसके बारे में एक निश्चित स्वरूप प्राप्त किया गया, तब उसे परंपरा के रूप में हमने स्वीकार किया। और ऐसी बहुत सारी ज्ञान परंपराएं आज भारतवर्ष में विकसित होती हुई आपको दिखाई देंगी, जो अनेक हजार वर्षों से अपने विषयों के माध्यम से, अपने सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से उन ज्ञानांश को लेकर आज आगे बढ़ने में। And as a result of this, the Indian knowledge system is founded the well-being of all. जैसे कि मैंने कहा कि 12वीं 14वीं शताब्दी के काल को अगर आप देखते हैं, तो जो पाश्चात्य यूरोपीय देशों में विकास के प्रति, भौतिकता के प्रति आस्था रखकर जो अन्यान्य मार्ग ढूंढे जा रहे थे, वो उससे हजारों साल पहले हमारे भारतवर्ष में उपभोग के द्वारा प्राप्त करके उससे ऊपर उठकर सब लोगों की क्षेम और मंगल की कामना हमारे सभी विषयों के द्वारा की जाती हुई हमें दिखती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कश्चित् इस शब्द का अर्थ होता है कोई भी, और इस कोई भी की जो परिभाषा है, उस परिभाषा को अगर आप जानना चाहते हैं, तो अभी जो G20 समिट हुई उसका जो एक मोटो था, वसुधैव कुटुंबकम, जो एक उपनिषद वाक्य है, उस वाक्य को देखेंगे आप तो अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यह संपूर्ण पृथ्वी हमारी कुटुंब के समान है। तो इस भावना का प्रतिफलन ज्ञान परंपराओं में तभी दिखाई दे सकता है जब आप उतना जी चुके हैं, स्वार्थ आपका पूर्ण हो चुका है। और स्वार्थ जब किसी व्यक्ति का पूर्ण हो जाता है, तब वह परार्थ की तरफ सोचने लगता है,
तो ये वेलबींग ऑफ ऑल, सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति कृण्वन्तो विश्वमार्यम, विश्व शब्द इस प्रकार की वसुधा का उल्लेख, इस प्रकार से सभी लोगों का स्वीकार, ये जो वेलबींग ऑफ ऑल का जो कॉन्सेप्ट है, ये जब विकसित होने लगता है आपकी समाज में, आपके प्रांत में, तो इसका मतलब आप स्वार्थ को परिपूर्ण करने के पश्चात परार्थ के बारे में चिंतन करने के लिए सक्षम हुए हैं। अभी आप उपभोग के बाद त्याग की भावना को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, इस प्रकार की हमारी संस्कृति है कि जो त्याग पूर्वक भोग का हमें संदेश देती है कि जरूर उपभोग करना चाहिए, लेकिन उस उपभोग के साथ साथ त्याग अगर आप करते रहेंगे, परार्थ का विचार करते रहेंगे, दूसरों का भी विचार करते रहेंगे, तो वो फिर से आपका स्वार्थ परिपूर्ण होने लगता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से एक वर्तुलाकार है चक्र सृष्टि का। सो इट इज बेस्ड ऑन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो कोई भी ज्ञान परंपरा, कोई भी ज्ञान ग्रंथ या किसी भी भाषा के प्राचीन साहित्य का अध्ययन आप करेंगे, तो वो सब विषय अगर आपको मूल रूप से कहीं लेके जाना चाहते हैं, तो उनका उद्देश्य वही है कि मनुष्यत्व को आप प्रामुख्य और प्राधान्य देते हुए उनके कल्याण और उनके मंगल की कामना को वहां पर स्वीकार करते हुए वो दिखाई देते हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड, पशु पक्षी प्राणी सभी का स्वीकार हम किया करते हैं, क्योंकि पंचभूतों से बने हुए इस शरीर का सिर्फ पोषण होने से परिपूर्णता नहीं आ सकती, बल्कि इन्हीं पंचभूतों से निर्माण हुआ यह जब जगत है, उसमें विद्यमान पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, सभी प्रकार के प्रकृति के घटक हो, उन दोनों का जब मिलन होगा और संतुलन प्राप्त होगा, तभी जाकर उस परिपूर्णता की ओर हम जा सकते हैं। सो इसीलिए एज वेल एज ऑफ नेचर एंड एंटायर एग्जिस्टेंस, किसी एक के विकास के बारे में, किसी एक के स्वार्थ के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत भावना को लेकर यह ज्ञान परंपराएं हमें ज्ञान प्रदान नहीं करती थी, बल्कि एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, क्योंकि एग्जिस्टेंस का लॉ ऐसे ही है कि किसी एक का एग्जिस्टेंस होने से कोई भी परिपूर्ण हो नहीं पाता है, तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर ही इस पर्यावरण, प्रकृति और मनुष्य को साथ चलना होता है। इसीलिए ये जो परस्पर समन्वय हमें दिखाई देता है, उस समन्वय के साथ इन ज्ञान परंपराओं ने मूल उद्देश्य को लेकर हमारे समाज में, हमारे भारतवर्ष में यह विचार विकसित किया, और इन विचारों के कारण ही एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। एक सुभाषितोक्ति कही जाती है कि भारतवर्ष की व्यक्ति के पास से, भारतवर्ष से अगर विश्व कोई सीख लेना चाहता है तो वो क्या सीख हो सकती है, तो वहां पर कहा है कि चरित्र, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः, आगे आने वाली पीढ़ियां अगर इस देश से कुछ लेना चाहती है, तो वो जरूर किस ज्ञान की या किस शिक्षा की महत्ता को प्राप्त करे, तो स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानव। चरित्र, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, एक इंग्लिश प्रोवर्ब भी है ना। तो इस प्रकार से वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च, धन संपत्ति इन सभी विषयों का उपभोग एक काल के बाद पर्याप्त हो जाता है व्यक्ति को, तो वो आते जाते रहते हैं, लेकिन वृत्त, शील, जिसे शील तत्व बुद्धिज्म में कहा गया है, जिसे वृत्त कहा गया है, जिसे व्यवहार या चरित्र कहा गया है, इसके बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हमारे सभी प्रकार की ज्ञान परंपरा में दिखाई देती है, जो कहती है कि उसको बड़े प्रयास से आपको संरक्षित करके रखना चाहिए, क्योंकि वही आपके अस्तित्व को आगे बढ़ाता है और आगे दिखाता है कि आप है कौन।
Okay, let me summarize few things ki what is IKS. IKS is a collective range of Indian knowledge that has exhibited in systematized ways of knowing. बहुत सारे भिन्न भिन्न विषयों को एक सुव्यवस्थित ढंग से ज्ञान परंपराओं के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था। तो ये किस प्रकार से या किस माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत हुए थे? इतनी बड़ी ये फिलॉसफी, इतना बड़ा ये विशाल हृदय का विचार, इतने बड़े सभी विषय कहाँ पर ये थे, किस भाषा में थे, किस ग्रंथों में थे? तो इसीलिए कहा गया है कि ये ज्ञान परंपराएं केवल पुस्तकों के, ग्रंथों के माध्यम से आई हुई है ऐसी नहीं, बल्कि इसके साथ साथ इन्होंने अपने अपने रास्ते ढूंढ लिए सभ्यता के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, आचार के माध्यम से, विचार के माध्यम से, अपने दैनंदिन जीवन के माध्यम से। और इसीलिए ये ज्ञान परंपराएं अपना रास्ता ढूंढते हुए समाज में एक रूप हो गई। और इसीलिए हमारी प्राचीन परंपराओं को अगर आप देखेंगे तो वो कहीं पुस्तक में लिखित है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तो पुस्तक के साथ साथ वो मस्तक में भी मिलेगी। कहीं पर जाकर आपको पॉटरी के लेसन्स आपको लिखे हुए, किसी ने पढ़ाए हुए, अपने बेटे ने पिता ने पुत्र को पढ़ाए हुए नहीं देखेंगे। वो तो एक हर कुंभकार है जो अपने मिट्टी के घड़े को बनाते बनाते आगे अपने परिवार को वो सिखाता है, और उसके हाथ की वो कला फिर वो आगे बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार की जो ये अन्य अन्य कलाएं हैं, विद्याएं हैं, ये सब भारतीय ज्ञान परंपरा का अभिमान है कि जो किसी एक विशिष्ट मार्ग को ही लेकर न विकसित हुई, बल्कि वो समाज में एक रूप हुई। और इसीलिए स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट कंपोजिशंस, अगर सैद्धांतिक रूप में इसका विचार किया जाए तो किसी साहित्य के आधार के बिना ज्ञान परंपराएं विकसित हो नहीं सकती है। तो इसीलिए इसका एक सबसे प्राचीन साहित्य का आधार लेकर अगर स्वीकार किया जाए तो स्टार्टिंग फ्रॉम द oldest compositions of knowledge, that is the Vedic literature to the country's native and tribal folklore, the Indian knowledge system is spread as a spectrum. मतलब अत्यंत प्राचीन काल में विकसित हुए वेद वांग्मयों से लेकर जनमानस में रहने वाले ट्राइबल फोकलोर तक, उनकी संस्कृति में, उनके गानों में, उनके रहन में, उनके पोशाक में, उनके पहरावे में, उनकी बातचीतों में, उनकी भाषाओं में, वहां तक फैली हुई यह भारतीय ज्ञान परंपरा है। वहां पर सब जगह सिर्फ और सिर्फ भारतीयता ही आपको दिखाई देगी, जो वेद वांग्मय में लेकर यहां तक आदिवासियों के रहन सहन तक पहुंची हुई है। सो इट हैज स्प्रेड इन अ वेरी वाइडन वे। ये कहीं मर्यादित होकर रही रुकी ऐसी बिल्कुल नहीं है। There is a vast repository of knowledge available not only in Sanskrit, Pali and Prakrit, but also in all native languages also. तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसका किसी एक विषय, एक भाषा के साथ संबंध अगर जोड़ा जाए तो वो भी अन्यायपूर्ण होगा, क्योंकि भारतीयता भारत में विकसित हुई सभी भाषाओं में थी। भारतीयता, भारतीय ज्ञान परंपरा सभी भिन्न भिन्न प्राचीन साहित्य वांग्मयों में थी। फिर वो संस्कृत वांग्मय हो, चाहे पाली वांग्मय हो, चाहे प्राकृत वांग्मय हो, या फिर प्रांतीय भाषाएं जो भी अत्यंत प्राचीन मानी जाती है, जैसे तमिलनाडु की या द्रविडियन प्रांतों में जो विकसित हुई भाषाएं हैं, उन भाषाओं में तिरुवल्लुर जैसे महान ज्ञानी विद्वत गण अपनी उस भाषा को लेकर उन भाषाओं में उन्होंने अपनी ज्ञान परंपरा विकसित की है। So not only in few languages but also in all native Indian languages. तो ये भारतीयता की पहचान हमारी प्रांतीय भाषाओं में भी है, स्थानीय भाषाओं में भी है, स्थानीय बोलियों में भी है। बस बोलियों में कुछ साहित्य का सृजन नहीं हो पाता है, और इसीलिए भाषाओं को अधिक प्राधान्य देते हुए उसका साहित्य सृजन होने की वजह से वो भाषाएं प्रामुख्य रूप से उनका आधार या स्रोत मानी जाती है। और इसीलिए संस्कृत, पाली, प्राकृत इन भाषाओं में जो कुछ साहित्य सर्जन हुआ, उन वांग्मयों को आधारभूत लेकर आज भारतीय ज्ञान परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देता है। लेकिन उसी के साथ साथ देयर इज अ वास्ट रिपोजिटरी, बहुत बड़ा एक साठा, समुद्र जैसा है, जो ज्ञान का एक समुद्र भंडार इन भाषाओं के साथ साथ प्रांतीय स्थानीय बोलियों में और उनकी सभ्यता और संस्कृतियों में भी हमें दिखाई देता है। एंड दैट इज IKS, वो भारतीय ज्ञान परंपरा है। केवल मर्यादित
किसी अंश तक उसको बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए शुरुआत में मैंने चर्चा की कि पहले हम समझ लेते हैं कि भाषाओं के माध्यम से साहित्य सृजन हुआ, इसलिए आधारभूत वो है, लेकिन इसका मतलब वहीं पे विद्यमान जो साहित्य है यही भारतीय ज्ञान परंपरा है, यहाँ पर मर्यादित मत कीजिए। उसके अलावा सभ्यताओं में, संस्कृतियों में, बोली भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में भी अन्य अन्य साहित्य का सृजन नहीं हुआ, लेकिन अन्य अन्य ज्ञान परंपराएं विकसित हुई, वो भी भारतीय ज्ञान परंपरा ही है। एकनाथांची भारुड, अगर आप बहुत सारे लोग मराठी जानकार है ही तो समवेअर आई विल कोट फ्यू रेफरन्सेस फ्रॉम मराठी ऑल्सो. एकनाथांची भारुड, विंचू चावला विंचू चावला ही काही लिहून ठेवून पुढे आलेली भारुड नाहीये. ती आपल्या संत परंपरेतून, वाङ्मयातून विकसित होऊन समाजात रुजलेली भारुड आहेत. त्यासाठी भारुडांवरती काही असा एखादा ग्रंथ लिहिला गेलेला पूर्वी नव्हता की भारुड कशी लिहावीत, त्याची रचना कशी असावी, उत्कृष्ट भारुडांची उदाहरणं कोणती, असं अजिबात नव्हतं. ते इट वॉज इन द प्रॅक्टिस. ते त्यांच्या जीवनशैलीत होतं. ते त्यांच्या कदाचित अनेक ज्ञान परंपरेचे विषय हे त्या काळी तत्काळी त्या त्या समाजाच्या उपजीविकेचे साधन होते. तत्काळी ते त्यांच्या मनोरंजनाचे साधन होते. कदाचित ते त्यांच्या प्रतिभा प्रकाशनाचे साधन होते. आणि म्हणून या ज्ञान परंपरा विकसित झालेल्या आहेत. आणि त्या ज्ञान परंपरांचा सगळ्यांचा अंतर्भाव आपल्याला या भारतीय ज्ञान परंपरेत करायचा आहे. असो, नाउ this has been remaining unexplored for the last several decades. आता या विषयाकडे येण्यापूर्वी, इस विषय को आने से पहले ये अभी जान लेते हैं कि तो फिर इतनी अलग अलग ज्ञान परंपराएं भारतवर्ष में विकसित थी जो बहुत सारी भाषाओं में और संस्कृतियों में दिखाई देती है, तो फिर क्यों आज उसके बारे में चर्चा की जा रही है? तो उसका इतना ही तात्पर्य है कि दिस हैज बीन रिमेनिंग अनएक्सप्लोर्ड फॉर द लास्ट सेवरल डिकेड्स. गत विगत अनेक वर्षों से, शतकों से इन विषयों के प्रति आस्था न दिखाने के कारण ये लुप्त प्राय होते जा रहे हैं. इनको एक्सप्लोर किया नहीं गया, इनको विकसित नहीं किया गया और इस वजह से ये विषय लुप्त प्राय होने लगे. आज अगर आप देखेंगे तो एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस करके एक कैटेगरी नई अस्तित्व में आई है, जिसमें ऐसे कहा जाता है कि देर आर मोर देन 14 to 15 एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस स्टेट वाइज. हर एक राज्य में, यद्यपि महाराष्ट्र राज्य की मराठी राजभाषा होने के बावजूद उसमें भी बोलियां अलग अलग है. तो उन बोलियों में भी हर एक प्रांत में, हर एक समाज और कम्युनिटी के हिसाब से उनकी कुछ बोली भाषाएं अलग होती है. तो उन बोली भाषाओं का लोप होते 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 जा रहा है. ऐसी बहुत सारी भाषाएं नष्ट हुई, ऐसे बहुत सारे विषय, संस्कृति और विषय, ज्ञान विषय नष्ट होने लगे. तो इन भाषाओं के साथ साथ उन भाषाओं में और बोलियों में जो ज्ञान निहित था वो ज्ञान आगे नहीं बढ़ पा रहा है. तो इसीलिए इनको और विकसित करने की आवश्यकता है कि शायद क्या पता इन प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से विकसित जो ज्ञान था वो आज बहुत उपयोगी हो हमें. और इसीलिए दिस हैज बीन रिमेनिंग अनएक्सप्लोर्ड फॉर द लास्ट सेवरल डिकेड्स. सो नाउ इट इज टाइम टू एक्सप्लोर ऑल दीज ट्रेडिशंस ऑफ नॉलेज ऑफ इंडिया. भारतवर्ष का यह ज्ञान है, ये कोई हमने कहीं से लाया हुआ, कहीं से प्राप्त किया गया नहीं है. हमारी भूमि में हमारे लोगों ने हमारे लिए विकसित किया गया जो ज्ञान है, अगर वो खुद हम उसको जान नहीं पा रहे हैं, उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बाहर वाला आके कोई उसकी सुरक्षा करेगा, ऐसे तो संभव है नहीं. आई विल कोट द एग्जाम्पल ऑफ इजराइल. अगर आप सब लोग जानते हैं तो इजराइल में एक समय ऐसा था, कुछ शतक या कुछ शतक भी नहीं, कुछ 70-80 साल पहले भी बोल सकते हैं, कि जब वहां की जो मूल भाषा थी हिब्रू भाषा, उस भाषा को जानने वाले गिने चुने लोग बचे थे वहां पर. गिने चुने, अंगुली गण्या जना, मतलब उंगलियों पर गिनने लायक लोग बचे थे. तब वहां पर कुछ रिवोल्यूशनरी इसी प्रकार से
कुछ एक्टिविटीज हुई जिसमें फोकस किया गया कि लेट इट बी एक्सप्लोर्ड, मतलब हिब्रू भाषा को पुनर्विकासित और प्रतिष्ठापित करने के लिए प्रयास किए गए राष्ट्रीय स्तर पर। और फिर धीरे 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 आज उस देश की स्थिति ऐसी है कि इजराइल देश में अभी सभी प्रकार का शिक्षण, सभी प्रकार का व्यवहार अनिवार्य रूप से हिब्रू भाषा में ही होता है, और वो बड़े अभिमान के साथ करते हैं। तो भारतवर्ष ने ऐसी अपने राज्यों राज्यों की कितनी सारी अपनी भाषाएं लुप्त कर दी है, खो दी है। आज गिने चुने लोग हैं जो इन प्राचीन बोलियों को, भाषाओं को और उसके निहित, उसके अंदर निहित उन ज्ञान को समझ पाते हैं या बोल पाते हैं। जब कुछ अन्य अन्य कठिनाइयां, समय प्रसंगवश समस्याएं उत्पन्न होती है, तब हम देखते हैं पीछे की तरफ कि शायद उसमें हमें कुछ उसका समाधान मिल सकता है। लेकिन तब इतना समय आगे निकल चुका होता है कि उस समस्या का समाधान वहां पर निश्चित रूप से होने के बावजूद भी आप तक पहुंचाने वाले या आप उसको लेने वाले सामर्थ्य तब रखते नहीं है। Indian knowledge encompasses the foundational knowledge, science, engineering, technology, humanities, and social sciences through a structured classification. ये वाक्य कोई अतिशयोक्ति को प्रस्तुत नहीं कर रहा है, बल्कि यह निश्चित रूप से ही सत्य है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में इन सभी विषयों का अंतर्भाव था। क्योंकि अगर आज घर बनते हैं तो सालों पहले भी घर मंदिर बना करते थे, जिन मंदिरों के निर्माण का रहस्य आज भी वैज्ञानिक लगा नहीं पा रहे हैं, जिन विशाल दुर्गों का, किलों का, उनकी अटूट श्रृंखला का रहस्य आज भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो क्या तब वह सिविल इंजीनियरिंग अस्तित्व में नहीं थी? क्या तब वह सभ्यता स्थापत्य कला की ज्ञान को नहीं रखती थी? बिल्कुल रखती थी, क्योंकि तब मानव था, आज भी मानव है। तब आज की जैसी मानव की जरूरतें हैं, तब भी मानव की जरूरतें थी। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्पशुभिर्नराणा, पशुओं में और मनुष्यों में ये कुछ चीजें हैं जो समान रूप से दिखाई देती है। यह हमेशा है, शाश्वत है, इसलिए इनको हम वासना कहते हैं हमारी सभ्यता में, और वही उसको मनोविज्ञान की दृष्टि में बेसिक इंस्टिंक्ट कहा जाता है। हम उसे कहते हैं षड्रस, नवरस, हम उसे कहते हैं आत्मीयता, भावना। पाश्चात्य देश उसे देखता है नीड्स, ड्राइव्स, मोटिव्स, इस प्रकार से। तो बहुत अंतर है, उस विषय की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अन्न, वस्त्र, निवारा या ज्या 3 मूलभूत गरजा व्यक्तीच्या सांगितलेल्या आहेत, तर त्या त्याही काळात होत्याच, आणि या पुरवण्यासाठी, या इन सभी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए इन सभी विषयों का योगदान तब भी था। तब भी टेक्नोलॉजी थी उस काल के अनुरूप, तब भी इंजीनियरिंग थी, तब भी साइंस था। क्यों केवल प्रैक्टिकल रूप से किया गया? अभी आयुर्वेद को आप स्वीकार करके उस आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार किस प्रकार से किया जा रहा है, वो आज आप देख रहे हैं। उसका उदाहरण, उसका अनुभव सब लोग ले रहे हैं। तो उस विज्ञान में वही, उस काल में वही विज्ञान था आयुर्वेद, जो वैद्य के माध्यम से स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य च चिकित्सा, इस प्रकार से उसको आगे लेके जाता था। तो इसीलिए केवल आधुनिक पारिभाषिक शब्दों को लेकर उन पैरामीटर्स में अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो कालानुरूप बदल निश्चित है ही। वो कहाँ नहीं माने जाते हैं। आज का आपका iOS हो या एंड्रॉइड हो या और कोई वर्जन हो अपडेटेड, 2 महीने बाद फिर आपको अपडेट करना ही पड़ता है। तो अपडेटेशन, कालानुरूप परिवर्तन, ये तो स्वाभाविक है। अब आप नोकिया के उस वर्जन को लेकर आज के iOS या एप्पल फोन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो वैसी ही ये बातें हैं। लेकिन उसमें कार्य, शायद कुछ काम की चीज ऐसी हो जो आज भी हमें उपयोग में आई है, तो उसको नजरअंदाज क्यों करना? और यही हुआ कि दिस has been remaining unexplored, and that is why now it is the time to explore all these things through the Indian knowledge systems, and IKS has evolved over the millions. बहुत कालों से लगकर ये विषय आपको दिखाई दे ऐसे है।
एक वाइड रेंज में अगर इसमें क्या क्या अंतर्भूत होता है, तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि यस, इट हैज इट्स ओन एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेदा एंड योगा विच कवर्स द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ह्यूमन। भारतीय गणित अस्तित्व में था, भारतीय काल गणना अस्तित्व में थी, जो काल गणना निश्चित रूप से आज भी हमारे भारतीयों में रग रग में बसाई गई है। आज भी हमारे सभी भारतीय उत्सव, आचरण, विचार, इन सभी भारतीय काल गणना के आधार पर ही है, जो कि ग्रहों को, उनके संक्रमण को, उनके काल, गति इत्यादि को लेकर निश्चित की गई है। यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मनयोस्तथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम अप्रत्यक्षानि शास्त्राणि प्रवादस्तत्र केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणो। चंद्र और सूर्य अर्क जिसकी साक्ष्य दे रहे हैं, ऐसे इस एस्ट्रोनॉमी के प्रत्यक्षता के बारे में कोई संशय नहीं ले सकता। भारतीयता गणितों में भी दिखाई देती है। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक के बारे में तो कहना बहुत संभव है, जो विषय मुख्य रूप से आज सर्वदूर प्रचलित हो चुका है। मेटलर्जी, रसशास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट साइंस एंड मेनी मोर, ये सभी अप्रोचेस या सभी विषयों को भारतीय ज्ञान परंपरा प्रस्तुत करती थी, करती आई हुई है। ये शुरुआत हुई तब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच इज कॉल्ड एज वैदिक सिविलाइजेशन, लगभग 4-5 हजार वर्ष पूर्व जब भारत में इस प्रकार की वैदिक सिविलाइजेशन का आरंभ हुआ, विच इज टेकन एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें जो भी वांग्मय का निर्माण किया गया, इन सब वांग्मयों में ये विषय अंतर्भूत हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसा वो क्या स्वरूप था उस वांग्मय का कि जिसमें इतने सारे विषय अंतर्भूत थे। रघुवंश महाकाव्य कालिदास ने लिखा है, वहां पर वो एक शिष्य का लक्षण बताते हैं कि एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है कि मेरी पढ़ाई खत्म हुई, मैं आपको कुछ गरी दक्षिणा देना चाहता हूं। तो वो पढ़ाई खत्म हुई ये बताने के लिए उन्होंने एक विशेषण उपयुक्त किया है, उपात्त विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कौत्सफ प्रपेदे वरतंतु शिष्य। तब गुरुकुल प्रणाली में अध्ययन करने की जो परंपरा थी, उसमें लगभग 7वें-8वें साल से लेकर 16वें साल तक 10-12 वर्ष अध्ययन किया जाता था। जो अध्ययन प्रगत अध्ययन के पूर्व, मतलब जैसे आज की भाषा में अगर हम कहेंगे तो ग्रेजुएशन तक का स्वीकार किया जाता था, और उसके बाद उसका स्नातक संस्कार होता था। ये सब विषय अन्य है। तो उपात्त विद्या, इस विशेषण को लेकर उन्होंने जो प्रस्तुत किया है वहां पर, इसका मतलब है कि आइडेंटिटी ऑफ दैट स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी क्या थी। तब कम से कम विद्या प्राप्त करने का जो विषय था कि उपात्त विद्या प्राप्त विद्यार्थी, जिस विद्यार्थी ने अपनी विद्याएं प्राप्त की है, ऐसे विद्यार्थी की संकल्पना जो की जाती थी उसे कहा जाता था उपात्त विद्या। और कितनी विद्याएं उसको सीखनी चाहिए थी तब? 14 विद्याएं, 14 विद्याएं उसको सीखनी चाहिए, ऐसा वहां पर बताया जाता था। तो ये कौन सी 14 विद्याएं हैं? अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणं चेति विद्याह्येताः 14। आप संस्कृत कोटेशंस को छोड़ दीजिए, लेकिन मैं जो बता जा रहा हूं उस पे ध्यान दीजिए कि 14 विद्याएं थी, 4 वेद, उस 4 वेद के 6 अंग, ऐसे कुल मिला के हो गए 10। उसके बाद और 4 विषय को जोड़कर उन्होंने 14 विद्याएं प्रस्तुत की है। तो अब इन 14 विद्याओं का अगर आप सूक्ष्म आकलन करके देखेंगे, तो मैंने पहले दिखाए हुए जो ये लिस्ट है, ये चार्ट्स है, और इनमें प्रस्तुत किए गए जो विषय है, उनको आप एक रूप होते हुए देख सकते हैं। और वही ज्ञान परंपरा फिर प्रवाहित होते 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 हुए सभी भाषाओं में, सभी सभ्यताओं में, सभी संस्कृतियों में प्रवाहित होती गई, लेकिन मूल रूप उसका वही रहा। और उसी आधारभूत तत्व पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के मार्ग पर ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, इन चारों को लेकर मुख्य मूल उद्देश्यों को जोड़ते हुए जीवन का प्रवास मनुष्य का चलता रहा।
और उसके माध्यम फिर बदलते गए, भाषाएं बदलती गई, सभ्यताएं बदलती गई, लेकिन जो मेन स्ट्रीम ऑफ द लाइफ जो था कि जीवन का एक आदर्श संक्रमण का काल, वो इन तत्वों के ऊपर आधारभूत होते हुए दिखाई देता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस प्रकार से 4 वेद स्वीकार किए गए हैं। इन 4 वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में अन्य अन्य अंग है, आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, और इन सबका एक अपना अस्तित्व है कि हाथों से हम कुछ क्रियान्वय करते हैं, आंखों से हम देखते हैं। तो वैसे ही छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। ज्योतिष को चक्षु कहा गया है, वेद का वेदांग ज्योतिष। व्याकरण को मुख कहा गया है, क्योंकि मुंह खोलने पर हमें अच्छा और सच्चा ही बोलना चाहिए, ये एक उसका अर्थ है। तो शुद्धता शब्दों की, साधुता, और उसी से अपने विचार आप प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए मुखम व्याकरणम स्मृतम। इस प्रकार से 6 अंग बताए हैं जो अन्य अन्य शास्त्रों का प्रतिपादन करते हैं, और उसके अलावा न्याय शास्त्र, धर्मशास्त्र इत्यादि को जोड़कर 14 विद्याएं भी प्रस्तुत की जाती है। तो इस प्रकार से जो चतुर्दश विद्याओं का प्रचलन उस काल में शुरू हुआ, उन चतुर्दश विद्याओं के माध्यम से ये सारे विषय विकसित होने लगे, और इन विषयों के माध्यम से वेद, वेदांग, मीमांसा, न्याय, धर्म इत्यादि विषयों के माध्यम से समाज में इन ज्ञान परंपराओं का स्थिरीकरण होते गया। कैसे स्थिरीकरण होते गया? तो तब की जो भारतीय शिक्षण प्रणाली थी वो इस प्रकार से थी कि गुरुकुलों में जाकर छात्र पढ़ते थे, उपनयन संस्कार किया जाता था सभी का। जिन उपनयन संस्कारों में, उसका अर्थ ही है उप समीप, नयन मतलब लेके जाना, गुरु के पास लेके जाना, और उन गुरुकुलों में गुरु के मार्गदर्शन में सभी विद्यार्थी अंतेवासी होकर, अंतेवासी शब्द प्रयुक्त किया गया है। अंतेवासी मतलब निकट रहकर, उनके साथ रहकर, उनके घर में रहकर, जिसको आज की शिक्षा क्षेत्र की परिभाषा में पर्सनल अटेंशन जिसे कहा जाता है, कि काउंसलिंग कहा जाता है, कि 1-to-1 मेंटरिंग कहा जाता है। तो वो मेंटरिंग पहले से ही हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली में उपस्थित थी, जो अंतेवासित्व के माध्यम से दिखाई देती है। तो छोटे छोटे गांवों में छोटे छोटे गुरुओं के पास 5-10 बच्चे, इस प्रकार से उसकी क्षमता के अनुसार, उस गुरु के विद्वत्ता के अनुसार हर गांव में, समाजों में इस प्रकार से अपने अपने विद्याध्ययन की परंपरा चलती थी। तो जिनमें केवल यह वेद, वेदांग आदि वैदिक वांग्मय ही नहीं, तो इसके साथ साथ स्किल एजुकेशन, कलाओं का भी अध्ययन और अध्यापन किया जाता था। और इसी का फल यह है कि भारतवर्ष में आज भी चतुष्षष्टि नहीं, लेकिन कम से कम 20-25 क्रियाएं सक्रिय क्रियान्वित होती हुई दिखती है। केवल कुछ कलाएं हमें परिचित है, चित्रकला इत्यादि, लेकिन इस प्रकार की 64 कलाएं विद्यमान थी, जो विभिन्न छात्रों को दी जाती थी, जिसका जहां पर कौशल्य है, उस कौशल्य के अनुसार वह व्यक्ति अपने कौशल्य को लेकर आगे बढ़ता था, और उसको अपनी उपजीविका बना के वो फिर समाज में प्रस्तुत होता था। लाइफ स्किल एजुकेशन, नॉट लाइफ लिविंग एजुकेशन, यह मुख्य उद्देश्य था तब ज्ञान परंपरा का, कि लाइफ स्किल एजुकेशन, आप अपने आप को कौशल्य युक्त बनाओ, जिससे कि आप समाज में कहीं पर भी जाकर अपना अस्तित्व सिद्ध कर सको। लाइफ लिविंग एजुकेशन जो है वो बहुत ही घातक है, कि जीने के लिए कुछ प्राप्त करना, उपजीविका इत्यादि, यह अगर अंतिम उद्देश्य हर एक के व्यक्ति में रहा, तो फिर वो स्पर्धा भाव को लेकर जिस प्रकार के आज के विद्यार्थी पूरे त्रस्त होते जा रहे हैं, उस प्रकार से तब भी हो सकता था। लेकिन उस वक्त का उद्देश्य जो था वो लाइफ स्किल एजुकेशन, न कि लाइफ लिविंग एजुकेशन। विद्यार्थी थे, वो परीक्षार्थी नहीं थे। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अर्थी शब्द, ये जो मराठी में, हिंदी में भी यूज किया जाता है, उसका मूल अर्थ यह है, अर्थिन, यह मूल संस्कृत रूप है उसका, जिसका अर्थ होता है याचना। याचना करने वाला होता है वह अर्थी।
तो आप वो शब्द किसी के भी साथ जोड़ दीजिए और उसका अर्थ प्राप्त कर लीजिए कि विद्या की याचना करने वाला वह है जिसे विद्यार्थी कहा जाता है। लाभार्थी, लाभ की याचना करने वाला। तो यहां पर वह व्याकुलता, विलिंगनेस, डेस्परेट कमिटमेंट, ये सब विषय जब तक उस विद्यार्थी में नहीं दिखाई देंगे तब तक वह याचकत्व उसमें नहीं आएगा। और इसलिए विद्या को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थित्व, याचकत्व उसमें निरूपित किया जाता था। और उसके बाद उसको एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म था अध्यापन का। आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया पादम सब्रह्मचारिभ्यः पादम कालक्रमेण ही। जो भी कुछ वो पढ़ेगा उस पढ़ाई के विषय वस्तु को 4 भागों में विभाजित किया जाता था। और गुरु शिष्य को पहले से ही बता देता था कि ये विषय वस्तु तुझे इस प्रकार से पढ़नी है। किस प्रकार से पढ़नी है? आचार्यात पादम, पादम मीन्स 1/4, 25% विषय को आपको गुरु से जानना है। निश्चित ही है वो आपको उसका मार्गदर्शन करेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन पूरा नहीं, स्पून फीडिंग में 25%। तो फिर बाकी बचे हुए 75% ज्ञान का और विषय का कैसे फिर प्राप्ति होगी? तो पादम शिष्य स्वमेधया 1/4 ही हैज टू अटेन इट ऑन हिज ओन। मतलब उसको अपने अपने पथ परिश्रम से, अपने हार्ड वर्क से, अपने होमवर्क से, अपने क्रिएटिविटी से, अपने सत्व को लेकर, मतलब खुद का योगदान देकर, सेल्फ कंट्रीब्यूशन देकर उसको अपने वो 25% जोड़ने हैं, उसको आगे लेके जाना है। फिर भी 50% बच जाता है ना, तो वो कहाँ? आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया पादम सब्रह्मचारिभ्यः सब्रह्मचारिणः। कितना ग्रेट और एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। देखिए, सब्रह्मचारी मतलब साथ में पढ़ने वाले आपके क्लासमेट्स, उनके साथ रहकर, उनके साथ चर्चा कर कर, उनके विचारों का, अपने विचारों का आदान प्रदान कर कर, दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप डिस्कशन, या फिर आप उसको पीयर लर्निंग कह सकते हैं सुंदर रूप से। तो पीयर लर्निंग का कॉन्सेप्ट देखिए कब था गुरुकुलों में, कि 25% ज्ञान उसको पीयर लर्निंग से ही लेना है। और सिर्फ इतना ही नहीं था, पादम कालक्रमेण ही, और बचा हुआ 25% आपको कालानुरूप आते रहेगा। वो अभी चाहिए करके मिलना चाहिए ऐसे मत रहिए, 75 पे खुश रहिए, बाकी बचा हुआ प्रतिशत आपको आपका काल देगा, आपका अनुभव देगा, आपका वह समाज देगा, आपकी परिस्थिति आपको वो बचा हुआ प्रतिशत 25% ज्ञान प्रदान करेगी। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो देखिए हाउ logically the education system was developed through one mechanism की जिसमें टीचिंग लर्निंग है, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट है, उसके साथ साथ पीयर लर्निंग है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी है, कि जो अनुभव से ही प्राप्त होने वाले हैं ऐसे विषयों को वो बोलते थे कि वो छोड़ दीजिए, काल वो अपने आप पढ़ा देगा आपको। इसका मतलब वो विषय जब प्रत्यक्ष अनुभव में आएगा, जब तुम वह प्रत्यक्ष काम करने जाओगे, तब वह सीख जाओगे बचा हुआ काम। क्योंकि कितनी भी अच्छी धनुर्विद्या सीखने पर भी खरी कसौटी तो तभी होगी ना कि जब जंगल में शेर सामने आएगा और तब आपकी विद्या आपको साथ देगी या नहीं, वो तो आज नहीं आप बता सकते ना। वो कालानुरूप अनुभवजन्य एक्सपीरियंशियल लर्निंग ही होगी, कि तब आपका हाथ कांपता है, वेपतश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संस्कृते हस्ता त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन की तरह आपकी अर्जुन विषाद योग स्थिति हो जाएगी, या फिर आप प्राप्त विद्या का उपयोग करके उसको क्रियान्वित करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो इस प्रकार से भारतीय शिक्षण पद्धति इन सभी विषयों को छात्रों तक पहुंचाती थी, और इसीलिए ये स्थिर और चिरकाल तक प्रवाहित होते हुए आपको दिखाई देती।
तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से ये सब आज दिखाई नहीं देता है, अस्तित्व में नहीं है? तो एक आर्टिकल है, कोई कहीं सुनी कहानी नहीं है, तो सब लोग जानते हैं, इसके बारे में चर्वित चर्वण करने की आवश्यकता नहीं है। लॉर्ड मैकाले जी की यह कृपा है कि जिन्होंने भारतीय शिक्षण प्रणाली और पद्धति को एक दूसरा मोड़ देते हुए हमारे अस्तित्व से हमें वो दूर लेके गए। भारतीयता को छोड़कर हम अभारतीय चिंतन की तरफ बढ़ने लगे और उसी को अपना मानने लगे, और इस वजह से इन सभी भारतीय ज्ञान परंपराओं का ह्रास, लोप होते हुए हमें दिखाई देता है। तो ये सिचुएशन है। मैं हमेशा कहता हूं कि कमेंट ऑन दिस की वो ढोने वाले हम ही हैं और उतने बदनसीब भी हम ही हैं कि हमें पता नहीं कि हम ढो रहे हैं वो कोई पत्थर नहीं बल्कि वो सोना है। तो इस प्रकार से इसको जानकर जब हम आगे बढ़ेंगे तब इन विभिन्न विषयों में विद्यमान एक एक अंश आपको कालानुरूप प्रासंगिक भी जरूर दिखाई देगा। बिकॉज इट हैज अ रिच इंडियन नॉलेज सिस्टम रेंजिंग फ्रॉम आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा। ये तो हम अनुभव में लाते हैं। आज भारतीयों की पहचान का एक जो अविभाज्य अंग है, जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति का मुख्य आकर्षण बिंदु जो है वो आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा है। इसकी सुदूर पहचान संपूर्ण विश्व में है हमारे भारतीय नृत्य की, हमारे भारतीय नाटकों की, हमारे भारतीय संगीत की और भारतीय कलाओं की। तो इन विषयों को अगर आप उतना उच्च स्थान देकर उसको शिरोधार्य मानते हैं तो बाकी विषयों को क्यों इस प्रकार से दुर्लक्षित कर रहे हैं? उतना ही ध्यान अगर आप अन्य भाषाओं के या सभी इन वेदादि वाङ्मयों के प्रति देंगे तो शायद इन्हीं विश्व विभूषित करने वाले आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा की तरह आपको अन्य अन्य भी विषय भारतीय ज्ञान परंपरा के प्राप्त होंगे, जिसमें से एक कुछ साल पहले जो सब लोगों ने स्वीकार करने के बाद हमें भी महत्वपूर्ण लगने लगा वो आयुर्वेद, और अभी अभी जो ट्रेंडिंग में है वह योग शास्त्र। लेकिन धीरे धीरे देखिए ये दोनों विषय हमसे दूर होते हुए जाते दिखाई दे रहे हैं। आज हमसे भी ज्यादा उन विषयों का प्रचार, प्रसार और स्वीकार विभिन्न पाश्चात्य देशों में किया हुआ जाता दिखाई देता है। तो वैसे ही सिमिलरली यू थिंक दैट कि ऐसे ही अगर बचे हुए कम से कम जो ज्ञान परंपराएं हैं, जो विषय है, उनके प्रति अगर हम ध्यान देते हैं और उसके अनुसंधान की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो शायद ये चार जो अस्तित्व प्राप्त कर चुके हैं, जो अस्तित्व प्राप्त करने गए हैं, वैसे अनेक अन्य विषय हमें निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। क्योंकि महाभारत का एक वाक्य है, वो शायद साहित्यिक हो सकता है लेकिन वास्तविक भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। शायद कथाकार अपने कथा के बारे में, लेखन के बारे में प्रशंसा करते हुए लिखते हैं इस प्रकार से, तो वो लिखा होगा कि अगर महाभारत में कुछ है ऐसा विषय तो वो बाहर भी दिखाई देगा। यदि हास्ति तदन्यत्र, मतलब महाभारत में जितने विषयों का वर्णन, जो कथाएं या अन्य अन्य स्वभाव व्यक्ति वर्णन किया है वो प्रपंच में बाहर भी दिखाई देगा। और यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, और यहाँ पर जो नहीं है वो बाहर कहीं नहीं है। मतलब संपूर्ण विश्व की सभी प्रकार के विषयों का वर्णन वहां पर किया है, ऐसा एक तात्पर्य कथन है। उसी को लेकर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भारतीय ज्ञान परंपराओं में निहित जो सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान परंपराओं के विषय है, उनमें भारतीय चिंतन के सभी अंश विद्यमान है। और भारत इतना प्राचीन धरोहर प्राप्त करने वाला विषय है कि जिसको विश्व का प्राचीन संस्कृति सभ्यता का देश माना जाता है, तो निश्चित ही जो बाहर कहीं नहीं होगा वो हमारे पास ही होगा, क्योंकि उतनी प्राचीनता हमारे पास है। हाँ Sir, sorry for disturbing you, sir. हाँ Myself, Sandeep Jewari from Walton Institute of Technology, Solapur. So, सर आपने जैसे actually in the starting itself I have told that we will wind up this and have discussion yeah. session of Okay, 15 sir. minutes. So let me Yes, complete. Only 4 slides yes. are remaining. Let Thank me you. complete and welcome. All the questions are welcome. Okay, okay, Definitely okay. we will discuss. Huh?
So along with this we can have mathematics, astronomy, science, technology and life sciences. अभी एक आपके साथ इंटरेक्शन सेशन है, तो ये शेयर करना चाहूंगा कि देखिए इन प्राचीन विषयों को पढ़ने वालों के पास वो दूरदृष्टि और वो शायद एप्लीकेशन पार्ट का जो एक लैक है, उस वजह से वो अपने रास्ते चलते जा रहा है और उसका महत्व, उसका संरक्षण करते करते जा रहा है। आधुनिक विषयों का व्यक्ति अपने अपने विषयों में मशगूल है। तो इन दोनों का मिलाप जब तक नहीं होगा और ये दोनों एकत्र आकर जब कुछ इस विषय को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तब तक ये अन्य अन्य आधुनिक विषयों के माध्यम से इसको देखा नहीं जा सकता है और इसकी प्रासंगिकता सिद्ध नहीं की जा सकती है। वृथा वृष्टि समुद्रेषु, समुद्र में वृष्टि का वर्षाव करने से कुछ नहीं होता है, व्यर्थ हो जाती है, तो वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए आज मुख्य उद्देश्य यही है कि एनईपी के माध्यम से इस भारतीय ज्ञान परंपरा को सब तक पहुंचाना, कि चाहे उस विषय की प्रासंगिकता कोई एक विषय अपने आप ढूंढ ले, हो सकता है कि कोई एक आधुनिक इत्यादि अन्य अन्य विषय पढ़ने वाला एक सोच ले कि अरे इसमें से एक अंश जो है वो मेरे विषय को लेकर अनुरूप है और उसको प्रासंगिक बनाया जा सकता है। शायद उसमें से कोई साइंस, उसमें से कोई टेक्नोलॉजी, उसमें से कोई लाइफ साइंस, उसमें से कोई गणित, उसमें से कुछ भी इस प्रकार का एक अंश भी अगर सामने प्रस्तुत होता है तो एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसीलिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिनका काफी हद तक आजकल सभी आईआईटीज में इस प्रकार के रिसर्च विंग के माध्यम से प्रयास किए जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि एनवायरमेंट एंड नेचुरल साइंस के इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। वृक्ष आयुर्वेद हो या फिर आयुर्वेद हो, हेल्थ केयर हो, योगा हो, लॉ हो, इन सब क्षेत्रों में आज भारतीय ज्ञान परंपराओं को जोड़कर उसके साथ साथ आगे बढ़ने का पूरा क्रियान्वयन हो रहा है। इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, इसमें भी आप देख सकते हैं कौटिल्य आज मैनेजमेंट के क्षेत्र में कितना प्रसिद्ध हो चुका है। बिजनेस और इसमें भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों का कितना बोलबाला है। तो इसी प्रकार से जो बाकी भी विषय है उनको भी अगर हम देख पाए उसमें, तो शायद ये विषय भी हमारे सामने जरूर विकसित और प्रकाशित होंगे। सो ओरल ट्रेडिशंस में निहित विषय हो या पाली, प्राकृत, तमिल इत्यादि भाषाओं में विषय हो, इसके लिए ही आईके सेल का निर्माण करके भारतीय सरकार उच्च शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इस भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आर्ट एंड लिटरेचर, एग्रीकल्चर, बेसिक साइंसेस, इन सब विषयों में कुछ अंश ले देने का प्रयास किया जा रहा है। और कंप्लीट करता हूं, लास्ट 1 और 2 स्लाइड है कि अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखने वाले चाणक्य, कॉर्पोरेट चाणक्य करके जिनको आज बहुत मार्केट किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य एजुकेशन शैल एम एट 3 आउटकम्स एज कैरेक्टरिस्टिक इन ग्रेजुएट्स। मतलब पदवी प्राप्त करके बाहर आया हुआ विद्यार्थी है, उसमें ये 3 गुण विकसित होने चाहिए: विद्या, विवेक और विचक्षणता। विद्या मतलब क्रिएशन ऑफ नॉलेज, विवेक मतलब कर्तव्य कर्तव्य बुद्धि, विजडम टू यूज द राइट नॉलेज इन राइट टाइम एंड राइट प्लेस फॉर राइट पर्पस, और विचक्षणता दैट इज स्किलफुलनेस, द स्किल सेट्स टू गेट द प्रॉपर रिजल्ट्स ऑफ नॉलेज इन रियल लाइफ। और इससे दूर अगर हमारा समाज जा रहा है तो वो इस वजह से है कि आज की शिक्षा में विद्या, विवेक और विचक्षणता, इन तीनों का संगम क्या सही मात्रा में हो पा रहा है, या केवल हम विचक्षणता की ओर ही सबको आगे लेके जाना चाह रहे हैं। अगर ऐसे होता है तो केवल विचक्षणता के साथ साथ भौतिकता और उपजीविका और स्वार्थ को लेकर ही हम सीमित रह जाएंगे। विवेक ह्रास अगर हो गया, विवेक की हानि अगर हो गई, तो उस विद्या का अविद्या में रूपांतर होने में कुछ भी समय नहीं लगता है। तो इसलिए इन तीनों का संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा बताती कि लिविंग विथ फुल ऑफ मीन्स has become the lone objective of current education, whereas the meaningful life is the goal of Indian education. आज मुझे पढ़ के क्या करना है, नौकरी मिलनी है, ये करना है, वो करना है, आगे बढ़ना है, स्पर्धा भाव है, ये विकसित करूंगा, ये इन्वेंट करूंगा, ये प्राप्त करूंगा, चांद पर जाऊंगा, मंगल पर जाऊंगा, सब कुछ प्राप्त करूंगा, फुल ऑफ मीन्स, लिविंग विथ फुल ऑफ मीन्स। लेकिन वही भारतीय ज्ञान परंपरा बताती है कि ये सब करने के बाद आपको फिर वापस आना ही है,
कस्त्वं कोहं कुता आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। ये सब होने के बाद वो क्षणिकता एक दिन तो पता चलनी ही है, उसके बाद फिर मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यही मूल प्रश्न पर आना है। तो इसलिए मीनिंगफुल लाइफ के बारे में जो भारतीय ज्ञान परंपरा हमें प्रबुद्ध विचार देकर प्रेरित करती है, उसकी तरफ आगे आगे और चाहिए, और उसके लिए हमें आज भारतीय ज्ञान परंपरा के विषयों की आवश्यकता है। In today's education, organization of knowledge content, what to know has taken over the best knowledge seeking inquiry, and how to know ये कहीं ना कहीं दूर होते जा रहा है। तो the entire education or Indian knowledge traditions has always focused on how rather than what. कुतो वा इमानि भूतानि जायन्ते केन जातानि जीवन्ति केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमं प्रैति युक्तः। यमन नचिकेत संवाद इत्यादि अनेक उपनिषद कथाएं हैं जिनको आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े तार्किक प्रश्न किए गए हुए आपको देखेंगे। हु, व्हाई, हाउ, इसके साथ शुरुआत होती है। तो ये सब हमारे ज्ञान प्रणाली के जो मूल विषय है वो आपको इन माध्यमों से आगे लेके आने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, और आप जो विषय के अथॉरिटी है उसके साथ साथ इस विषयों का संगम अगर हो जाए तो उससे कुछ नया हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी विचार को लेकर भारतीयता को ढूंढने के लिए और भारतीय ज्ञान परंपराओं में विकसितता लाने के लिए, आधुनिक विषयों का उसको योगदान देते हुए आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के विषय का एक परिचयात्मक भाग सबको होना चाहिए। इसलिए 2 क्रेडिट्स का एक जेनरिक कोर्स अंडर ग्रेजुएट लेवल में, और देन डिसिप्लिन स्पेसिफिक के एक 4 क्रेडिट के कोर्स इस प्रकार से डिजाइन किए जा रहे हैं। तो एक सामान्य परिचय ये दिया था, बल्कि यह एक बहुत बड़ा विस्तृत विषय है। तो आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। और अभी हम 10 मिनट 15 मिनट जो चाहे आप आपके पेशेंस के अनुसार, क्योंकि आपने बहुत पेशेंटली सुना तो मैं भी उतना ही पेशेंस रखूंगा, तो चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद समाप्त करेंगे। थैंक यू एवरीवन। हेलो सर। जी सर नमस्कार, मेरा नाम संदीप जयवेरी है, फ्रॉम वॉच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शोलापुर। आपका मैंने प्रेजेंटेशन देखा सर, बहुत अच्छा लगा एंड हैप्पी विद दैट द इंफॉर्मेशन। आपने बहुत ही बढ़िया बताया, सरलता से बताया है। सर मेरा अनुरोध है कि हम जो अभी अलग अलग भाषा में पढ़ते हैं, जैसे कि मराठी, इंग्लिश वगैरह वगैरह, तो जो हमारा संस्कृत भाषा में जो ज्ञान था, व्हाई नॉट वी पुट दैट सब्जेक्ट फ्रॉम द रूट लेवल, दैट इज फ्रॉम द LKG टू 10th। क्योंकि क्या है, उसमें ग्रामर, सिंपल सिंपल वर्ड्स रहते हैं, वो हमें आचरण में इजी जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि बहुत से बच्चे CBSE, स्टेट बोर्ड, इसके पीछे लगे हैं। तो ये जो ज्ञान है अगर हम रूट लेवल पे लाएंगे तो धीरे धीरे वो पौधा बढ़ेगा एंड ही कैन एक्सप्लोर हिज नॉलेज इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। जैसे आपने बताया धातु शास्त्र है, रस शास्त्र है, अलग अलग विद्याएं हैं, उसमें वो गहन अध्ययन करके उसका आविष्कार हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी जी जी, बिल्कुल प्रयास तो वही है, पर जो अंतर बहुत दूर हो चुका है, जिसमें इन सब विषयों को और इनको आउटडेटेड माना जा रहा है। पहले तो अभी एक मोटिवेशन और प्राइड उत्पन्न कराना यह मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि मेरा एक मानना है कि कोई भी चीज कंपल्शन करने से या अनिवार्य करने से वो प्रचलित नहीं होती है। अगर आप समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो अगर आप कुछ विषयों को अनिवार्य कर कर उसको आगे बढ़ाएंगे, तो वो अनिवार्यता एक जबरदस्ती से आई हुई, लादी गई हुई ये होती है। आप प्रेरणा दे दो, आप प्राइड क्रिएट करो, आप अभिमान और जो गर्व है वह उत्पन्न करने का प्रयास करो, और वो जिस दिन उत्पन्न हो जाता है तब समाज खुद ही उसको इतना आगे लेके जाता है कि फिर आपको वो देखने की जरूरत नहीं होती है उसके प्रति। तो किसी भी विषय या वस्तु को इस प्रकार से पॉलिसी से धीरे धीरे आप उसका प्राइड डेवलप करते हुए अभिमान और गर्व उत्पन्न कराने की भी क्षमता रख पाए, तो बच्चे अगर उनको अगर आकर्षित हुए और उनको अगर अभिमान लगा कि अरे हमारे भारतीय विषयों में इतना गर्वास्पद विषय है, तो वो खुद होके आगे बढ़ेंगे और वो खुद होके उसको इनोवेटिवली डेवलप करेंगे, क्योंकि ये उन्हीं से होना है। तो ये एक प्रयास है
इसको आगे बढ़ाते हुए आप जैसे लोग जुड़ते जाएंगे तो जरूर उस प्रकार से भी आगे निश्चित ही लक्ष्य साध्य होगा। थैंक यू। यस सर। और जी कुछ? सर, जी सर। जी सर और एक थोड़ा पूछना था। जैसे हम मराठी में हम सुख करता दुख हरता गणेश जी की आरती कहते हैं, हमें मराठी पता है। लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते तो हमें एक संस्कृत जो सब्जेक्ट था वो ऑप्शन था। तो एक्चुअली ऑप्शन रखने से क्या होगा फिर वो हम उसको जी 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 डीपली नहीं पहचान सके। जैसे कि हम अभी बालाजी का सुबह का जो रहता है सुप्रभातम, कौशल्या सुप्रजा राम, वो इतना बढ़िया है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं, इसलिए हम पूरा उसको मुख में नहीं ला सकते, उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बिकॉज वी आर नॉट एबल टू नो व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस ईच एंड टर्म। जैसे सुख करता दुख हरता क्या है, पॉपुलर है बिकॉज वी आर आवर, इसीलिए तो मैंने बोला ना, रूट लेवल पे अगर आएगा तो धीरे धीरे विकसित होगा वो। जी जी ऐसा मुझे जी लगता है जी। सर। थैंक यू सर, नहीं, थैंक बिल्कुल यू। बिल्कुल। आई थिंक और कोई पूछना चाहते थे जब चल रहा था प्रेजेंटेशन, तो अभी आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम विद द परमिशन ऑफ अतिक सर ये कर सकते हैं। हम्म, Any question from audience? Those who are attending? I don't think, sir, there are any questions. ओके ओके देन। So, on behalf of Ankit, I don't know whether he's there. On behalf of UGC, HRDC, I would like to put on record sincere thanks to Dr. Parag Joshi, sir, for sparing his valuable time. And the deliberation was really excellent, sir. Many of the things we do not know, and you have explained it in a very simple and I should say a very effective manner. So once again, I put on record my sincere thanks to you, and we will trouble you, sir, as and when required. Thank you once again. श्योर श्योर सर। Yes, sir. So I will be prepared. Yes, sir. Thank you. Thank you Thank you. Mohammed ji, Thank you. Thank you. and thanks everyone for patiently listening. सर्वे And भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Thank you everyone. so we'll meet tomorrow as per the schedule. Thank you, sir. Thank you once again. Thank you. Dr. Atik sir, thank you.